to the covers. Once again a single. Good batting there by Sri Lanka. They are getting the singles without taking too many risks. Ravindra not able to keep that line going. And anything on the offside is a single because there are plenty of gaps out there. Slip backward point, man on the cover, fence cover, very short extra cover and a long off on the offside. Here is Ravindra into Tikshana outside the off stump. Tikshana has a very close look at it. Thinks of playing it, but then thinks otherwise, allows it to go through to Latham. Sri Lanka remain on 152 for the loss of 9 wickets. 29 is Tikshana, facing up to Ravindra. Once again on target is Ravindra. Good bowling, good length. On middle and off stump, Tikshana giving it the respect it deserves. Realizing that there's only 1 wicket remaining, he'll wait for something which is on the loose side to take toll off. Here is Ravindra again. Into Tikshana, off the back foot, Tikshana plays it back along the track for Ravindra to field on his follow through, and there is no run. Mahendra Tikshana and Mahesh Tikshana, beg your pardon, and Dilshan Madhushanka, the 2 batters out in the middle. The Sri Lankan top order once again letting their side down. Ravindra into Tikshana, and Tikshana off the back foot plays it down to long on. That is excellent batting. Keeping the strike, getting a single, just 3 singles of the over from Ravindra. An economical over, mind you. But the fact that Sri Lanka still hanging in there, 153 for 9 at the end of that 39th over. So 11 overs still to go. Even if Sri Lanka score at 4 runs in over, that would mean 44. So that would take them close to 200. If somehow they can get past 200, I think they will have something to bowl against the New Zealanders. We have seen turn and bounce Mukul on this pitch. And with the Sri Lankan bowlers who are quite skillful, I think it would be an exciting contest if they can get past 200. Lockie Ferguson, 9 overs, 2 for 33. Partnership 25 between these two, important partnership. There haven't been too many partnerships in this game, as Ferguson, for the last over of his spell, runs in to bowl to Tikshana. Tikshana off the front foot plays it very compactly and very capably up to mid-off. The New Zealand captain, Kane Williamson, is out there. No run. New Zealand remain on 153 for 9. The best partnership in this innings has been between Asalanka and Pereira, which was 38. The next best has been between De Silva and Matthews. And here is Ferguson again. Into Tikshana. Tikshana now growing in confidence every minute, every delivery. Plays it down to third man, angling his bat. Past the diving Mitchell at slip. Down to Trent Bolt on the third man fence. Another single takes him into the 30s. He is the second highest scorer by a long way. 51 is Kusal Pereira. And the next best so far was Dhananjay De Silva of 19. But Tikshana going well past him. He's on 31 now. 31 of 75. Madhusanka also into double figures. 10 of 20. And the crowd here has something to cheer for, something to look forward to. They are enjoying this last wicket partnership. Any rearguard action is always exciting to watch. Here is Ferguson into Madhushanka, and that is put him in a very awkward position. Too good for him. Trying to take evasive action. Somehow manages to get glove to ball. Ball goes down to fine leg. That must have hurt. He has removed his gloves, having a look at his fingers. One hopes that there's no serious damage done. Doesn't seem to be. But New Zealand have not refrained from using this ploy to the low order Sri Lankan batters. They have gone with the short ball. There is a short leg in place. And they think this is par for the course. Here is Ferguson following up that short ball with a slower ball. Trying to fool Tikshana, trying to sell him the dummy. But Tikshana is up to it. Realizing that this is what Ferguson was going to offer. Plays it back along the track quietly, and there is no run. Tim Southee at mid-off, rolling his arms. It might be Southee who will come into the operation soon. Rest of the bowlers completing their quotas. As here is Ferguson again. Into Tikshana, off the back foot. Tikshana very correctly playing it back along the track for Ferguson to field on his follow-through. Bolt and Santner have completed their quotas. This is Ferguson's last delivery. He will complete his quota.
So of the 5 bowlers we have seen so far, Team Saudi has 5 overs to go, Ravindra has 5 overs to go, and if Sri Lanka manage to hold on to this delivery, then there will be exactly 10 overs remaining. Here is Ferguson for the last ball of his spell, runs in, bowls to Tikshna, that shot into his ribs, and he's hurt. We'll have to wait and see where exactly that has hit. He's flat on the ground in obvious pain. It has probably hit him on his glove. That is painful. Ferguson is seriously fast, and that was not a short ball. It was short all right, but not a short pitch delivery in that sense. But it was fast, it came in, and Tikshna not quite capable and not adept at handling those deliveries. Mukuli seems to be in some serious pain. It's hit him on his wrist. He is an off spinner. He can ill afford to have an injury on that hand. लेकिन तारीफ करनी होगी नंदन, दोनों खिलाड़ियों की आखिरी जोड़ी है, लेकिन जबरदस्त खेल रही है, पूरा संघर्ष कर रही है. ये नहीं कि जिस तरह से मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने तूचल में आया वाली स्थिति की थी सेंटनर के सामने, ये लोग दोनों बहुत एकाग्रता से खेल रहे हैं. और आप देखिए कि न्यूजीलैंड के कप्तान को रणनीति बनाई है कि तेज गेंदबाजी जारी रखी है और उनको बाउंसर्स डाल रहे हैं लास्ट के खिलाड़ियों पर. यानी वो चाहते हैं कि किसी तरह ये आउट हो. लेकिन तारीफ करनी होगी श्रीलंकन बल्लेबाजों की. काश मध्यम क्रम या ओपनर इस तरह का जुझारूपन या ऐसी आग अपने भीतर रखते. स्कोर चाहे 155 हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी जो क्रम है श्रीलंका का वो बहुत प्रभावी रहा. 31 से 40 ओवर के बीच में 30 रन बने, 1 विकेट गिरा. 21 से 30 ओवर के बीच में 14 रन बने, 1 विकेट बना. 1 ओवर में 14 रन बन जाते हैं, 16 रन बन जाते हैं, या 10 ओवर लगे 14 रन बनाने में. नंदन, ये भी क्रिकेट का एक अलग रूप है. कहा 400 रन इसी मैदान में न्यूजीलैंड ने खुद ने बनाए पिछले मैच में, और यहाँ पर श्रीलंका संघर्ष करते हुए. 40 ओवर की समाप्ति पर 155, 9 विकेट के नुकसान पर उनकी कलाइयों के आसपास आके बाउंसर टकराया तो वो काफी दर्द में थे. क्या फर्ग्यूसन ने वो दर्द महसूस किया? I don't think any bowler really enjoys hitting the batter, but then there is a batter with all the protection. He has a helmet, gloves, thigh pad, forearm guard, chest guard also these days. And as we said earlier, in the earlier days it was an unwritten rule that number 9, 10 and 11 were not bounced at. But in the modern game, that has gone out of the window, and we see even a number 11 batter, as we are seeing now. The last wicket is in the middle, but they are still bowling the short pitch deliveries. सोचने की बात है, विलियमसन की अपनी सोच है. इस समय उन्होंने सऊदी को बुलाया. फर्ग्यूसन के 10 ओवर हो चुके हैं और पावर प्ले थर्ड है. उन्होंने कोई समझौता करने की कोशिश नहीं. विलियमसन खुद भी गेंदबाजी करते हैं, स्पिन आक्रमण करते हैं, बहुत सारे स्पिनर हैं, लेकिन वो नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि भैया किसी तरह से श्रीलंका की ये जोड़ी खत्म हो जाए. मुझे लगता था कि मेरे को स्पेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा श्रीलंका के लिए, लेकिन 41वें ओवर में फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार थे. रोका बल्लेबाज ने. समय ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं. सऊदी फिलिप्स को क्या मौका मिलेगा? चौथी बार ऐसा हुआ है कि जब गेंदबाज दौड़ने के लिए तैयार हो सऊदी और वो रुके. मधुशंका है उनके सामने 11 रन पर. सऊदी की गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर. पूरी तरह जैसे जमे हुए बल्लेबाज नहीं होते उस तरह से ये दोनों बैटर. बहुत तारीफ करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं. उस क्षण जब आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम का मनोबल टूटा हुआ है, इन लोगों ने एक ऐसा मार्गदर्शन प्रस्तुत किया कि भैया आप लोग अगर ऐसा खेलते तो शायद स्कोर क्या कुछ होता. सऊदी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर कमेंटेटर बॉक्स एंड से पूरे प्रहार करने की कोशिश में. कप्तान विलियमसन, बाउंसर, सब कुछ तरकश के तीर, और इस बार ड्राइव किया उसको हवा में, तेजी से जा रहा है वो. मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रन. जितनी तारीफ करूं नंदन कम है इन आखिरी जोड़ी के लिए. मनोबल देखिए, बाउंसर झेलने के बाद चौका मार रहे हैं. Absolutely, but I think Williamson will have to consider his plans now because he still has 5 fielders inside the ring. He needs to have only 4, and he's happy to concede these boundaries in the hope of getting the wicket.
अतिरिक्त जोखिम उठा रहे हैं वो सऊदी। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर स्टेयर करना चाहते थे, पॉइंट पर तेजी से उसको फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक कोई रन नहीं बना। सो आप जोखिम लेते हैं, ठीक है, रिस्क लेने से आपको प्रॉफिट मिलता है, क्रिकेट में भी ये सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन रिस्क कहीं भारी ना पड़ जाए आप पे, क्योंकि एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आरंभिक जोड़ी लड़खड़ाई तो आपका बहुत मजबूत इतिहास नहीं है ऐसा। सो कभी भी दबाव वापस आप पर आ सकता है। सऊदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, 47 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट लिया है, 6वां ओवर है ये। सऊदी की गेंद अंदर आती हुई गेंद थी, हवा में थी, मौका था, 3 फील्डर मौजूद थे एकदम नजदीक में, पॉइंट कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन उनसे उनको ललचाती हुई गेंद उन तक पहुंची, आमंत्रित करती हुई। अधूरे तरीके से खेला था, वो स्ट्रोक लेना भी चाहते थे और बल्ले को पूरी तरह से वो गेंद को दिशा देने में सफल नहीं हो पाए। हवा में थी, पॉइंट और कवर के दोनों खिलाड़ी को ऐसा लग रहा था कि उनकी पहुंच तक आ जाए तो क्या कहने। 159, 9 विकेट के नुकसान पर सऊदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर लगभग ललचाती हुई, आमंत्रित करती हुई पढ़ने की कोशिश की थी वहां पर मधुशंका ने, लेकिन असफल हुए। विकेट कीपर लेदम को मौका मिला, सऊदी बड़बड़ाते हुए कि भैया इसमें टच हो जाता बैट तो क्या कहने थे। 159, 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी सिरदर्द बनती हुई, पेशानी पे बल कहते हैं तो विलियमसन के काफी ये परेशान करती हुई जोड़ी, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी तरह से मधुशंका और तीक्ष्णा को वो विचलित कर पाए। सऊदी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए धीमी गति की गेंद थी, अंदर आती हुई, पूरा सम्मान दिया, आखिरी क्षण तक खेला, तालियों की गड़गड़ाहट दर्शकों के बीच में से इस आखिरी जोड़ी को सम्मानित करती हुई। नंदन, Very well played indeed by Madhushanka. That boundary through mid wicket and then getting behind the ball, beaten by a beauty from Saudi, but that is expected because he is not a top order batter. But he's kept his wits about him, he has kept his senses around him, he's realized that Tikshana is batting very well at the other end, and these two have put on more than 30 runs for the last wicket, and that will give them a lot of heart. Madhushanka himself a left arm seamer, so when he comes into bowl later, he would have this confidence behind him. And Glenn Phillips coming into bowl. किसी जैसे हम बात कर रहे थे कि तेज गेंदबाज अजमा रहे हैं, अब विलियमसन खुद को क्या लाते हैं, फिलिप्स को लाना उन्होंने बेहतर समझा। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं फिलिप्स और 159, 9 विकेट के नुकसान पर ऑफ ब्रेक डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। BML एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्पिन बॉलर, 26 वर्ष उनकी उम्र है, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स इस समय गेंदबाजी करके क्या इस श्रीलंकाई जोड़ी को तोड़ने में सफल होंगे। तीक्ष्णा उनके सामने 31 रन के स्कोर पर क्रीज के कोने से, और उसको ड्राइव किया खूबसूरती से, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर डीप स्क्वायर लेग से बहुत पहले। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, तुरंत कोई अवसर नहीं। 159, 9 विकेट के नुकसान पर 31 रन की भागीदारी मधुशंका और तीक्ष्णा के बीच में है। फिलिप्स क्रीज के कोने से, और इस बार पुल करने की कोशिश की थी, गई स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद है वहां पर, डीप लॉन्ग लेग पर फील्ड हुई। 1 रन और लेना चाहते थे, आधे पिच तक आ गए थे और बॉल जाकर लगी फिलिप्स को। क्षमा मांग रहे हैं इस समय मधुशंका और तीक्ष्णा। क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वहां घायल करने में कोई क्षमा नहीं मांग रहा। यहाँ चोट लग गई उनके बैट से टकरा के तो उन्होंने क्षमा मांगी। 32 रन की पार्टनरशिप 56 गेंदों में, मधुशंका 15, तीक्ष्णा 32। मधुशंका सामने फिलिप्स के। श्रीलंकाई आखिरी जोड़ी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती हुई, जितनी भी तारीफ की जाए अस्त होते हुए सूर्य में कम होगी उनके लिए। धीरे धीरे दूधिया रोशनी से ये स्टेडियम नहाने की तैयारी करते हुए, डूबता हुआ सूरज श्रीलंका के लिए क्या संदेश लेके आया है। फिलिप्स फ्लाइटेड गेंद, पूरी पहुंच का इस्तेमाल किया, 1 रन लेना चाहते थे, आधे पिच तक आ गए थे। मधुशंका चाहते हैं भाई सीनियर खिलाड़ी आइए, कुछ रन बनाइए, आप ज्यादा आतुर हैं, लेकिन रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं। वो समझा रहे हैं अपने पार्टनर को, भैया हम ले सकते थे 1 रन। 160, 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका। फिलिप्स गेंदबाजी करने के लिए, चौथी गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर आई, तेजी से नीची भी रही
और बैट का कॉर्नर लेके एकदम से पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए थे, इसमें कोई शक नहीं फिलिप्स की गेंद को। कोई रन नहीं, 160, 9 विकेट के नुकसान पर 42वां ओवर चल रहा है। फिलिप्स गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार टॉप स्पिन हल्के से उसको खेला ऑफ साइड में, 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक कि पॉइंट का खिलाड़ी तेजी से फील्ड करता, जो कि सीमा रेखा के पास थे। चैपमैन दौड़ते हुए आए, सीमा रेखा से 10-1 मीटर अंदर खड़ा कर रखा है, जबकि आमतौर पर बाउंड्री पर एकदम चिपकते हुए होते हैं ताकि छक्के को रोकें। आखिरी गेंद इस समय फिलिप्स की। मधुशंका किसी चुस्त बल्लेबाज की तरह चारों तरफ फील्ड का मुआयना करते हुए अब बोले उन्होंने फिलिप्स से कि आइए बॉलिंग करिए। क्रीज के कोने से हल्के से उसको ऑफ साइड में खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक कि ऑन फील्ड होती वो 1 रन से संतुष्ट। ओवर समाप्त हुआ फिलिप्स का पहला ओवर, 3 रन दिए, 162, 9 विकेट के नुकसान पर 42 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। 162 for 9. Sri Lanka, a very good last wicket partnership. The 9th wicket fell with the total on 128. So that means that they have put on 34 runs and that wicket fell in the 33rd over. We are in the 43rd over now. So they have played 9 overs, scored 34 runs and certainly have given Sri Lanka something to smile about. Ravindra brought back into the attack. The 1 over from Saudi, which went for 4, convinced Williamson that slow bowling is the way to go. He got in Phillips from the BEML end, a good tight over from Phillips. And now Ravindra for his 6th over. 5 overs, 1 for 18. A slip in place. Williamson still looking to try and wrap up this new Sri Lankan innings. He does not want them to play out the remaining overs. Here is Ravindra into Tikshna, who comes forward and plays it into the offside. A hesitation between the two batters whether to go or not to go for the single. Ultimately they decide to go for it and complete it comfortably. The single takes Tikshna on to 34 and brings Madhushanka on to strike. Madhushanka at number 11 has batted very well. That would put his senior batters, top order batters to shame. As here is Ravindra into Madhushanka of the back foot. He plays it very competently to Tim Saudi at backward point. And there is no run. A slip backward point, cover, extra cover, and a mid-off on the offside, a mid-on, a mid-wicket, a man on the mid-wicket fence, and a short fine leg. As here is Ravindra firing it in, bowling flat, bowling fast, trying to get him leg before wicket or bowled. But Madhushanka is up to it, comes forward very capably and plays it quietly out onto the offside. Ravindra, who completes his overs very quickly in Jadeja style, and also the fact that the batters are not really looking for runs means that the New Zealand bowlers have been able to get through their overs pretty fast. Ravindra once again coming up, bowls to Madhushanka on his middle and leg stump. Fuller delivery, forward comes Madhushanka, plays it up to Williamson at mid-wicket. And now that fielders go off, the cover goes to the cover boundary, mid-off to long-off and mid-on to long-on. As here is Ravindra into Madhushanka, flatter through the air, off the back foot, he plays it up to cover. There is no run, 1 run of the over. The 43rd over of the Sri Lankan innings, 163 for the loss of 9 wickets Sri Lanka. 6 overs, 1 for 19, Rachin Ravindra. So all the bowlers have very flattering figures, but that has largely to do with the fact that the Sri Lankan batters up the order committed harakiri. They showed little spine, little fight, little gumption. They were not prepared to hang in there. They went for the big shots. At least a couple of them were guilty of that. The others were beaten by the pace and the turn and spin of Santner. And the result is that Sri Lanka struggling, 163 for 9. I think New Zealand would be very happy with the situation they are in, but would be just mindful of the fact that they have not been able to close the Sri Lankan innings. Saudi now replacing Phillips from the other end. Runs in, bowls to
Tikshna. The first ball is played by Tikshna up to Santner at point and there is no run. So Williamson switching his bowlers around. Saudi, who bowled his first spell from the BEMLN, came back from the pavilion and bowled 1 over. Phillips bowled 1 over from the BEMLN, but now Saudi has come back into the attack. Saudi, 4 overs to go for him, 4 overs to go for Ravindra. There's also Daryl Mitchell, whom Williamson can call upon, and also he himself bowls some handy off spin. Here is Saudi into Tikshna. Tikshna off the back foot punches it to the left of Williamson at mid-off, and before the Kiwi captain can run to his left and do the fielding, the batsmen go through for 1. The single taking Tikshna on to 35, Sri Lanka on to 164 for the loss of 9 wickets. They lost the 7th wicket in the 19th over, so these last 3 wickets have batted out almost 25 overs, which is commendable. Here is Saudi, right arm over, passes umpire Wilson, bangs it in short for Madhushanka. Madhushanka comfortably goes underneath it. Holstock, the square leg umpire, signals to Joel Wilson that is 1 for the over, acknowledged by the batter and the bowler. Credit must be given to the Sri Lankan tail because they have negotiated the short pitch bowling pretty well, apart from one delivery which hit Tikshna on his forearm. They have not been hit anywhere. They have left the balls well or defended them well. Here is Saudi in search of that last wicket. Runs in, bowls to Madhushanka, and Madhushanka for first time in a while goes for an expansive drive, hoping to hit it somewhere between long off and extra cover, one thinks. Misses it completely. The ball goes through to the wicket keeper. Tom Latham, the wicket keeper, standing well behind, began the proceedings with a drop chance, made it up with a catch the very same over, then also dropped Angelo Matthews off the bowling of Santner, but that did not hurt New Zealand much because Matthews was dismissed soon after. That stroke from Madhushanka prompting the mid-on to be pushed back to long on, as here is Saudi. Slow one to Madhushanka, short of the back foot. Madhushanka once again steers it down to third man. A lot of runs have come in that area. Not for boundaries because there is protection in the deep. That single taking Madhushanka up to 17. Half of what Tikshna has done. Tikshna is 35. And this last wicket partnership carrying on, continuing, blossoming. Sri Lanka 165 for the loss of 9 wickets. A very, very good rearguard action this by Sri Lanka. And as the crowd keeps building up here on this nice cool evening in Bengaluru, the crowds have witnessed some very fine batting by the low order Sri Lankan batters. Here is Saudi into Tikshna. Tikshna trying to play it square on the offside, looking for that run. Disappointed with himself that he was not able to beat the fielder at backward point. Straight to Santner. End of that over then from Team Saudi. At the end of 44 overs, Sri Lanka trying to get up to 200, 165 for 9. एक 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका और 200 रन की ओर अग्रसर होना, कहाँ 150 रन की अग्रसर हो रहे थे तो बहुत आश्चर्य हो रहा था. इसी कहते हैं क्रिकेट. आप 91 में 7 विकेट आउट हो जाते हैं और लक्ष्य मिल जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं. इस विश्व कप ने बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए जहां पर असंभव संभव हो गया और संभव असंभव होता नजर आ रहा. मधुशंका 17 पर, तीक्ष्णा 35 पर 85 गेंदों का सामना कर चुके हैं. तीक्ष्णा तारीफ करनी होगी उनकी. मधुशंका सामने है. रविंद्र के गेंदबाजी के जिम्मा बाएं हाथ के गेंदबाज रविंद्र के हाथों. पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद टर्न के साथ विकेट कीपर के ग्लोव्स पे चिपकती हुई, जो कि विकेट के चिपक के खड़े हैं लेंथम. बल्लेबाज ने प्रयास नहीं किया, सिर्फ देखा पर उसे आखिरी क्षण तक. पहले बल्ला जरूर उठाया हुआ था, फिर उसके बाद रक्षात्मक खेलना चाहते थे लेकिन उनको चीरती हुई निकल गई बेचारों को. और इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, कोई प्रयास नहीं. ये दोनों बल्लेबाज क्या आदर्श पैदा कर रहे हैं. आरंभिक जो जोड़ी थी श्रीलंका की या मध्यम क्रम के गेंदबाज, वो बल्लेबाज सोच में पड़े हुए होंगे कि हमने क्या किया. रविंद्र फिर चूके
इस बार ये बंगलुरु अपने आप में एक इतिहास बनाने वाला है कि बॉलर्स सबसे ज्यादा चूके रन अप पर रुक जाते हैं गेंदबाजी करने के लिए। रविंद्रा की फ्लाइटेड गेंद सुरक्षात्मक तरीके से कॉपी बुक स्टाइल से, जैसे कोई डिक्शनरी में कोचिंग कर रहा हो उस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत खुश हो रहे होंगे, नंदन खुद कोच हैं, खिलाड़ी हैं, तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा इन खिलाड़ियों का खेल। 165 9 विकेट के नुकसान पर रविंद्रा की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, सीधा ड्राइव किया फील्ड, खुद बॉलर ने उसको अपने फॉलो थ्रू में लिया। कोई रन नहीं, रन बने न बने, आप जिस हिम्मत से मैदान में डटे हुए हैं और हर तरह के बॉलर का सामना कर रहे हैं वो तारीफे काबिल है। आपने आक्रमण करके कलाइयां तोड़ने की कोशिश की और वो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ निकलती हुई 1 रन ले पड़े जब तक कि पॉइंट पर फील्ड होती। स्कोर बढ़ाया 166 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी रविंद्रा की इस ओवर की, 7वां ओवर है, 20 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट लिया है। क्या कुछ कर पाएंगे, सोच रहे होंगे इस गेंद में ऐसा क्या करूं कि श्रीलंका की जोड़ी टूट जाए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तीक्ष्णा सामने है, 35 रन बना के रविंद्र के सामने ड्राइव किया उन्होंने, 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक कि डीप पॉइंट पर फील्ड होती। 1 रन से संतुष्ट। 167 9 विकेट के नुकसान पर 45 ओवर की समाप्ति। मैं 36 ओवर से सोच रहा था कि अगला स्पेल मुझे कमेंट्री करने का श्रीलंका का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंदन देंगे अवसर या नहीं देंगे, लेकिन नंदन बराबर डक करके बाहर निकलते हुए। कमाल है ना। Actually, even I was thinking the same thing when they were 105 for 7, that it might be a very short commentary stint as far as the innings is concerned. But the way Sri Lanka have fought back, I think, is admirable. And there's still some way to go, 5 overs to go. And you never know, they might suddenly go for the big shots, get some lusty blows in, and Sri Lanka might get to a very respectable total. नंदन सच कहूं, मुझे आप जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि 150 रन बनेंगे, 200 रन बनेंगे। मैंने कहा आपके पूर्वानुमान गजब के हैं, लेकिन मान गए उस्ताद। सऊदी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद हवा में थी, थर्ड मैन की तरफ उछाल कर खेलना चाहते थे। तीक्ष्णा काफी अनुभवी खिलाड़ी है, 36 रन बना चुके हैं। एक चेतावनी देते हुए एम्पायर की, भैया शॉट ऑफ लेंथ जो आप बाउंसर डाल रहे हैं वो 1 आप डाल चुके हैं, अब 1 और अवसर मिलेगा आपको मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डालने के लिए। अरे भैया सीधी गेंद डालिए, चौके छक्के पड़िए। वो तो बराबर ऐसी गेंद डाल रहे हैं जिससे कि वो खेल ही नहीं पाए। अपने तरकश के सारे तीर अजमाते हुए विलियमसन सऊदी गेंद करने के लिए तैयार है और ड्राइव किया है उसको। गई जरूर ऑन साइड में है, तेजी से पुल करना चाहते थे कुछ और गई वो लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन मिला उन्हें। आश्चर्यचकित बल्लेबाज भी और फील्डर्स भी। 1 रन के साथ श्रीलंका का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय। एक बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से सिमट रही थी पारी, उसको कितना बढ़िया आगे उन्होंने बढ़ाया। 168 9 विकेट के नुकसान पर 45 ओवर की समाप्ति पर, जहां लग रहा था अब खत्म हुई, लगातार अग्रसर होती। मधुशंका सामने सऊदी के ड्राइव किया है उसको, फील्ड हुई जब तक कि मिड ऑफ पर 1 रन बना नहीं बना, वो तेजी से थ्रो वापस आ गया था। सऊदी सब कुछ कोशिश कर रहे हैं और अब धीरे धीरे हाथ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज चाहते हैं कि कुछ रन और बटोर लें, क्या पता कौन सी गेंद आखिरी हो। 168 9 विकेट के नुकसान पर 45.3 ओवर का खेल हो चुका है। सऊदी ने अब तक 1 रन दिया है। बेंगलुरु साक्षी बन रहा है एक संघर्ष वाली पारी का। मधुशंका 18, तीक्ष्णा 37। 9 विकेट के नुकसान के बाद श्रीलंका अड़े हुए हैं। पहला विकेट 3 पे, दूसरा विकेट 30 पे, तीसरा विकेट 32 पे। आरंभिक बल्लेबाज क्या कुछ ऐसा खेलते, ऑप्शन से काफी बाहर थी, हल्के से खेला उसको पॉइंट की तरफ। चैपमैन जब तक की फील्ड करते, तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। 170 9 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये आखिरी जोड़ी है जिससे किसी को कोई आशा नहीं थी। इनके कप्तान को भी इतनी आशा नहीं होगी कि ये लोग ऐसा करेंगे, नहीं ना नंदन? Probably they would have been preparing to come out to field. विकेट कीपर तैयार हो रहे थे, मेंडिस पैड बांधे हुए होंगे कि विकेट कीपिंग करनी है।
क्योंकि आखिरी बल्लेबाज तो कोई है नहीं जो पैड बांध के तैयार हो। सऊदी 41 की पार्टनरशिप और ऑफ स्टंप से बाहर ऊंची हवा में थी, उसको थर्ड मैन की तरफ किसी तरह से धकेला जब तक बोल्ट फ्री करते 1 रन के लिए। 170 9 विकेट के नुकसान पर 42 रन की पार्टनरशिप 83 गेंदों में। मधुशंका 19, तीक्ष्णा 22। क्या बात है, क्या बात है। धूप सूर्य एकदम ढलने की तैयारी में और फ्लड लाइट्स चमकने की तैयारी में। क्या कुछ छिपा हुआ है इस मैच के भविष्य में, वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेंकट क्या कहते हो? वेंकट मौन है एकदम, बोले शब्द विहीन हो गया हूं मैं श्रीलंका की इस पारी को देखकर। सऊदी 3 रन दे चुके हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई कुछ धीमी रही, बाउंसर नहीं था और ओवर समाप्त। 1 ओवर और 46 रन। अगला स्पेल फिर नंदन, क्या अविजित निकालेंगे 48 तक? That remains to be seen, Mukul. That is entirely up to Tikshna and Madhushanka. But the way they are playing, it looks like they will play the entire quota of 50 overs. The way they have batted also would, in a way, makes New Zealand happy, because that means that the wicket is good. There are no demons in the wicket. When we had those 2 wickets of Santner, we thought that there might be some extra turn in the pitch. But the way they have batted after that has shown us that it's still a very, very good wicket to bat on. Ravindra continuing his spell, 7 overs, no maidens, 1 for 21. The man on strike is Mahesh Tikshana. When he came out to bat, nobody expected him to last this long, but he has confounded all of us as the first ball is driven to the left of Phillips there at extra cover, and it dives to his left and stops what could have been a certain couple, if not more. The New Zealand ground fielding has been superb. They are catching a little iffy, but they are still on top. Here is Ravindra into Tikshana, tossing it up, enticing Tikshana to go for the big stroke. Tikshana restraining himself, just trying to work it round the corner. Gets it on his pads. Leg by signal by umpire Holstock. So the extras move up to 4, 3 white balls and the first leg by. So very disciplined bowling by New Zealand. That brings Madhushanka on to strike. The slip still in place. Here is Ravindra. Into Madhushanka. Madhushanka comes forward and plays it up to cover. Conway the fielder there. The batsmen think of a single but then think otherwise, as Conway is very quickly onto it. And had they gone through for the single, that might have been disastrous. Sri Lanka would be hoping to bat through the 50 overs. As here is Ravindra into Madhushanka. That is not to be. That ball took turn. Madhushanka playing off the back foot. Gets the outside edge. Latham makes no mistake. And that brings the Sri Lankan fight back to an end. What an excellent fight back this has been. After a dismal performance from the Sri Lankan top and middle order, the last 3 wickets pulling the Sri Lankan score to 171. So that is what Sri Lanka finish on, 171 all out. So that means that Sri Lanka will have to defend that. New Zealand, when they come out to bat, will have to chase 172. Under the lights, dew might come into play. 50 overs, 171, so well under 4 runs in over. So Mukul, what do you reckon? Will it be an easy run chase for Sri Lanka, or for New Zealand? Or will Sri Lanka come out with the same fighting spirit that they've shown in the latter half of the innings and make life difficult for New Zealand? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंदर जो इनर फीलिंग होती है वो कह रही है कि इसमें एक संघर्ष देखने को मिलेगा. इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मनोबल श्रीलंका के आखिरी बल्लेबाजों ने खड़ा किया है, तो कुछ प्रेरणा तो बाकी फील्डर्स और गेंदबाजों को भी मिली होगी कि यस, जब इन लोगों ने फाइट किए तो हम भी फाइट कर सकते हैं. और अच्छी अगर ओवर उन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी की, बॉलिंग जो उनकी फास्ट बॉलर्स पर ज़्यादा बेस है उनका, और स्पिनर्स भी अच्छे हैं. 1-2 विकेट अगर शुरुआती दौर में ले लिया तो न्यूजीलैंड प्रेशर में आ सकती है. I think that is imperative for Sri Lanka. If they are to make something in this game, they will have to pick early wickets, because they cannot hope to restrict New Zealand under 171 if they bat the 50 overs. The only way they can win is to bowl out Sri Lanka, and for that they will have to pick early wickets.
one way for them to go could be that they might start with spin at one end, because we have seen some turn on the wicket. So maybe one of the Sri Lankan spinners could start the bowling from one end. But all said and done, a very satisfying and a comprehensive performance by New Zealand in the field, winning the toss, electing to field first, and they kept on picking wickets, reduced Sri Lanka to 105 for 7, and then 113 for 8, and then 128 for 9 before this last wicket partnership of 43 runs put Sri Lanka in some kind of position where they can hope to fight back, hope to make something of this game. The top scorer for Sri Lanka was Kusal Perera, the opener. He made 51 of 28 deliveries. We'll give the scorecard to you. Pathum Nissanka caught Latham bowled Saudi 2. Kusal Perera caught Santner bowled Ferguson 51. Kusal Mendes caught Ravindra bowled 6. Vikramasinghe caught Mitchell bowled 1. So the news from the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru is that Sri Lanka have been bowled out for 171 of 46.4 overs. New Zealand will come out to chase 172. But before that happens, before we come back for the second innings of this game, we will take you back to the studios in Delhi. We would like to tell you that we will be back on air at 5:52 p.m. Until then, we take you back to the Delhi studios. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. कौन बनेगा विजेता? कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और एक समय तो न्यूजीलैंड ने 7 विकेट केवल 105 रन पर झटक लिए थे, लेकिन थोड़ी देर पहले जब श्रीलंकाई टीम ऑल आउट हुई तब उनका स्कोर 171 रन था और 46.4 ओवर भी वो खेल चुके थे, यानी अपनी ओर से एक अच्छी वापसी की। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे दो बहुत ही खास मेहमान, बीसीसीआई अप्रूव्ड कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। स्वागत है आपका। धन्यवाद आदेश। रविंद्र, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अब ढहे तब ढहे, लेकिन ढहते ढहते भी दीवार मजबूत कर गए। देखिए, कमिटमेंट की कमी है, एक अच्छी सोच की कमी, एक विजन की कमी है। ये दिखाया थिक्शाना ने। 90 बॉलें खेल गए, 15 ओवर अकेले खेले, 40 रन बनाए और मधुशंका जो कि नंबर 11 थे 48 बॉलें खेल गए। 48 बॉलें ऊपर से किसी बैट्समैन ने नहीं खेली। अभी देखिए 2, 4, 6 ऐसे बॉलें खेल के आउट हुए। कुशल परेरा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया 28 बॉल, जो कि एक स्टार्ट चाहिए भी था, लेकिन कोई भी खड़े होने को तैयार नहीं है। सब अपनी विकेट थ्रो करके आए। विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आखिर के जोड़ी ने दिखा दिया ये। लेकिन एक कमिटमेंट की कमी आपको लगा है कि कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं, T20 मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप, जो बुरा रहे थे। और आप ये देखिए कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना, और जिस हिसाब से आप खेल रहे हो, इसका मतलब तो है ये आप डिजर्व ही नहीं करते हो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हो। पैथेटिक परफॉर्मेंस में। लेकिन राकेश, ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह के झटके दिए उसके बाद तो लगा कि शायद 120-130 के करीब ऑल आउट हो जाए, लेकिन बाद में आपको लगा न्यूजीलैंड की बॉलिंग में भी दम नहीं था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की बॉलिंग हुई है, जो शुरुआती 10 ओवर थे उसमें करीब 74 रन पे 5 विकेट निकल गए थे आपके मेन बैट्समैन सारे। कुशल परेरा ने जरूर 51 रन बनाया 28 गेंदों में, सबसे तेज अर्धशतक भी उन्होंने लगाया इस वर्ल्ड कप का। लेकिन जो एक कमिटमेंट की कमी होती है कि वो दोनों तरफ से नजर आई कि जब आपने 5 विकेट जल्दी निकाल दिए थे 10 ओवर के अंदर, रन जरूर 74 दिए, लेकिन आपको पारी को जल्दी समेटना चाहिए था। और आप ऐसे मुकाम पर हैं कि जब आपको अपने नेट रन रेट पर पूरा ध्यान देना है। ये न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी कमजोरी रही कि उन्होंने इस तरह की जो गेंदबाजी की धार जो है ना, वो एक कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई हाँ, हमने तो अभी पारी को समेट दिया इनकी। लेकिन जो जिस तरह की बल्लेबाजी निचले क्रम ने की, और खासतौर पर महेश दीक्षाना ने और दिलशान मधुशंका ने, रन तो उन्होंने देखो 39 और 19 बनाए, लेकिन शॉट्स भी उनकी तरफ से देखने को मिले। और जो गेंदबाज है उनके पास इनको कोई हल नहीं नजर आ रहा था। कैचेस जरूर गए, बॉलें उछली, लेकिन नो मैंस लैंड के ऊपर।
तो मुझे लगता है बोल्ट ने भी फॉलो थ्रू में एक कैच छोड़ा। जो टाइट, जिस तरह की इनको 5 विकेट लेने के बाद जिस तरह की टाइट बॉलिंग और फील्डिंग करनी चाहिए थी, फील्ड प्लेसमेंट भी वैसी नहीं हुई जो कि इनको आउट कर सके। तो वहां कहीं कहीं कप्तानी की भी मुझे कमी दिखी कि आपने एक होता ना कि जाल बिछाना चाहिए था इनको जल्दी आउट करने के लिए, तो वो जाल इतना मजबूत नजर नहीं आया कि उसमें ये जल्दी से फंस सकते हैं। ऐसा लगता था कि कबूतर ही जाल ले उड़े, जैसे कि एक कहानी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टैट्स हमें दिया है कि आखिरी 2 विकेट ने रविंद्र जी 23.3 ओवर बल्लेबाजी की और 58 रन बनाए। देखिए बताओ, जैसे सिर्फ 9 विकेट आउट हो चुके हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि इसको जितना लंबा खींचा जाए, और उन्होंने डिफेंसिव खेलते गए, रन बनाने की उन्होंने सोची नहीं। बीच में जो एक आध क्योंकि जब उन्होंने न्यूजीलैंड ने अटैक करना शुरू किया तब एक आध उन्होंने चौका वौका लगा के पूरा किया तब। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, ये कमिटमेंट दिखाता है कि अगर आप खड़े होना चाहो तो खड़े हो सकते हो, बॉल को मेरिट पे खेलना है। प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जो पीछे कोच हैं, जो मैनेजर हैं, उनको एक बताना चाहिए कि 20 ओवर में आपने 100 बनाना है, 30 में 150 बनाना है, 40 में इस तरह बनाना। आप चल गए, आप 200 रन बनाएंगे तो लास्ट के 10 ओवर में हम 70-80 रन बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको विकटें हों। लेकिन कोई प्लानिंग नहीं, पहली बॉल आउट हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है, तीसरा आउट हो रहा है, लाइन लगती जा रही है। कोई लगता ही नहीं कि कोई सपोर्ट स्टाफ है इनके पास जो इनको बता रहा हो, कोई कोच, बैटिंग कोच बता रहा हो कि आप खड़े रहिए, विकेट्स को रोकिए, रन बाद में बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इनकी जो डोमेस्टिक में जो इश्यूज हो रहे हैं वो सामने पूरा निकल के आ रहे हैं। कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और आखिर के दोनों जो बैट्समैन वो इस तरह लग रहा है वही एक बैटिंग करने आए हैं, बाकी किसी प्लेयर्स को खड़े होने का कोई शौक नहीं था बीच में। और राकेश कौशल परेरा जो कि अच्छे भले सेट हो चुके थे, लेकिन आपको लगा कि बहुत गंदा शॉट खेल कर आउट हुए वो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो जिस तरीके से खेल रहे थे, देखिए एक बार आपने अच्छा स्टार्ट दे दिया, तेज खेल लिया, लेकिन आपको पारी को संवारना भी है। आप जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हो उसमें कितनी देर सर्वाइव कर पाएंगे, ये देखने वाली बात थी। रन क्रिकेट के अंदर ग्राउंड शॉट से भी बनते हैं। खाली आप हवा में आंख बंद करके मारते जाएंगे या अपनी बहुत तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे, विकेट आप गंवाना, आपको क्रीज पे खड़े होने की जरूरत है। अगर वो लंबी पारी खेलते तो उनका साथ दूसरे बल्लेबाज भी देते, लेकिन सब ने एक दूसरे की नीति को अपनाया कि जिस तरह से रैश शॉट्स खेलो और विकेट को भेंट करते चले जाओ। वो तो देखिए, अब ये निचले क्रम में जब महेश दीक्षाना और मधुशंका आए, इन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की तो उन्होंने एक वो दिखाया कि हमारे अंदर वो एक क्षमता है, हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि हमें खूंटा गाड़ के पिच पे रहना है, और इस वजह से वो रन बनाए। और देखिए, तमाम महेश दीक्षाना ने तो सबसे ज्यादा गेंदें खेली, 9 से 11 के जो बल्लेबाज होते हैं नंबर के, उसमें 83 गेंदों का रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा, और 91 गेंदें उन्होंने खेली। तो आपको वो ग्रिड दिखानी पड़ती है कि भाई हमें यहाँ पर खेलना है। वो न्यूजीलैंड के जो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं उनमें वो चीज मिसिंग रही। हाँ, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी आपने बहुत सही कहा कि पिच में ऐसा कुछ दमखम नजर नहीं आया था कि जिसकी वजह से बल्लेबाज आउट हो रहे हो। वो इन दोनों ने दिखाया भी, अगर आप टिक के खेलेंगे, ध्यान से खेलेंगे, तो आप इस पिच पे खड़े होकर रन बना सकते हैं, जो कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज नहीं कर पाए। 9 खिलाड़ी कैच आउट हुए, 1 खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू हुआ, तो ये बताता है कि कितनी गैर जिम्मेदारा बल्लेबाजी करते हुए अपने कैचेस उन्होंने न्यूजीलैंड के फील्डर्स को दिए। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे श्रोताओं से जुड़ने का। जो हमारे नए श्रोता हैं वो फोन कर सकते हैं हमें 23421083, 23421085। दिल्ली से बाहर के श्रोता 01 लगाना ना भूलें। पहले लिसनर से जुड़ते हैं। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, रुमाना बोल रही हूँ, सुल्तानपुर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइए। जी आदेश जी, मुझे ये सवाल पूछना है कि श्रीलंका की टीम कब तक परिवर्तन के दौर से गुजरती रहेगी? आज भी हम ये देख सकते हैं कि इतनी टीम, मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं उसके बाद भी आज भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया उनमें। सब वही नए के नए पूरी टीम में है, कोई भी जिम्मेदारी से नहीं खेल पा रहा। एशिया कप से लेके आज तक उनका खराब प्रदर्शन चल ही रहा है, तो ये जानना है मुझे। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लिसनर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मैं कुल्लू से सर राजू सिंह। सर, मेरे 2 प्रश्न हैं जी। सर, मेरा एक प्रश्न जब ये है कि जब आपका कैच भी छूटा, आपने 50 से 51 बना लिए,
तो सर उसके बाद अब गलत शॉट मार के कैसे आउट सकते, इतनी अच्छी पिच, इतनी फ्लैट पिच। तो सर मैं दूसरा प्रश्न ये है कि जो सर श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप को खत्म होने के इंतजार नहीं किया कि पहले ही उन्होंने जो है पैनिक बटन दबाया, क्या ये बात गलत नहीं है? थोड़ा वर्ल्ड कप का इंतजार करता है तो उसके बाद प्रोएक्टिव होते हैं। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा इन्हीं दो सवालों पर करते हैं। रविंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एक वो दौर था जब श्रीलंका की टीम में रमेश कालू, वितरणा, जयसूर्या, अरविंद शिल्वा, महानामा, गुरसिंगे, लेकिन एक दौर होता है खिलाड़ी आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्या उसका असर इतना पड़ा है कि टीम आज तक उठ ही नहीं पाई? देखिए ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका जो डोमेस्टिक जो सेटअप है वो कैसा है, ये डिफरेंस आपको देखने में आ रहा हो। देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जहां पे अंडर 19 की तैयारी शुरू हो जाती है, अंडर 23, अंडर 15, अंडर 16, ये सब नॉर्मली चलते हैं और रेगुलर पूरे साल चलते रहते हैं आप। और उसके बाद बोर्ड इनको बहुत सपोर्ट करता है, बोर्ड से बहुत फैसिलिटी मिलती है, बोर्ड इनको। अब आप देखिए कि इंडिया की तैयारी वर्ल्ड कप से पहले से ही 6 महीने पहले शुरू, एशिया कप हो रहा है, ऑकलैंड आयरलैंड सीरीज हो रही है, वहां जा रहे हैं यहां जा रहे हैं। अच्छा, अपने जो रेगुलर प्लेयर्स को उन्होंने बिठाया, रेस्ट कराया और दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया, बी टीम को चांस दिया, उसमें से ये निकल के सूर्य कुमार वगैरह, ईशान वगैरह सब निकल के आए, इन्होंने फिर उनको चांस दिया। जसप्रीत बुमराह को जो फिट नहीं थे उसके बाद उनको लेके आए, वो फिर भी फिट नहीं हुए। ये एक सिस्टम होता है, पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है ये इसकी। और आप अभी देखिए जब तक आपके डोमेस्टिक इश्यूज ठीक नहीं होंगे, अभी बोर्ड आपने अभी देखा, अभी बोर्ड चेक कर दिया गया, कोर्ट में गए, ये चीजें अगर वर्ल्ड कप के दौरान चलेंगी तो क्या कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कुशल परेरा का, मेरे ख्याल से कुशल परेरा देखिए एक अटैकिंग बैट्समैन है। जब वो 22 बॉलों में 50 कर रहे थे तो सबको अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा मार रहे थे, लेकिन अब आप एक आदमी की जो गेम होती है वो गेम रातों रात चेंज नहीं की जा सकती। अटैकिंग प्लेयर है, वो चौके छक्के मार के खेल रहे और रन उनको उसका बेनिफिट रन बना रहे हैं। अगर आप उनको कहो जो आप डिफेंसिव हो जाओ, अब आप सिंगल, वो इस तरह गेम नहीं चेंज की जा सकती। एक प्लेयर जो होता है उसकी नेचुरल गेम होती है, हर रोज वो चेंज नहीं कर सकता गेम को। और जहाँ तक मेरा ख्याल है राकेश जी, रविंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि क्यों पाकिस्तान और श्रीलंका का हश्र ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के दौरान ही उन्होंने घुटने टेक दिए। लेकिन आज आपको लगा कि एक 5वें बॉलर की कमी, एक अच्छे खासे बॉलर की कमी न्यूजीलैंड को महसूस हुई? देखिए बॉलर की कमी तो क्या कहेंगे, अब ट्रेंट बोल्ट ने तो 3 विकेट शुरू में निकाल दिए थे। जो फर्स्ट पावर प्ले है उसके अंदर 8 मैचों में उन्होंने 3 विकेट लिए थे और आज एक ही मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन जो उसका फायदा उठाना चाहिए था, विकेट्स जल्दी गिरने का, वो नहीं उठाया गया। कुशल परेरा का जो कैच छूटा टीम साउथी की गेंद पर, तो वो बड़ा आपको नुकसान कर गया, इतने रन। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं उसमें। अब आप कहेंगे कि भाई ट्रेंट बोल्ट है, टीम साउथी है, लॉकी फर्गूसन को लेके आए, मिचेल सेंटर है, रचिन रविंद्रा हैं, ग्लेन फिप्स, इतने बॉलर उन्होंने इस्तेमाल किए और ये बल्लेबाज ऐसे नहीं लग रहे थे कि इनके लिए और इससे अच्छी क्वालिटी वाला बॉलर चाहिए। यही लोग इनको आउट कर सकते थे। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट का रहा। क्या होता है कि जब निचले क्रम का बल्लेबाज है वो लॉन्ग ऑन की तरफ मारता है, आपने फील्डर को मिड ऑन पे लगा लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हुई, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कप्तान विलियमसन से भी इसमें थोड़ी सी गलती हुई फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर, कि जो टेलेंडर्स हैं उनके लिए किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट आपको करनी चाहिए, गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करे कि जहां आपने फील्डर लगाया है वहां पे शॉट्स जाएं। जो चीजें देखने को मिली, हाँ ये जरूर है कि वनडे क्रिकेट के अंदर हमें सिली पॉइंट देखने को मिला, फॉरवर्ड शॉट लेग देखने को मिल गई, स्लिप मिल गई, क्लोजिंग में गली मिल गई देखने को, एकदम नजदीक बल्ले के, काफी घेर के भी रखा क्लोजिंग के। ऐसे फिल्डर जल्दी से वनडे क्रिकेट में नजर नहीं आते। राकेश, आपने ये देखा होगा कि शुरुआत में स्लिप ज्यादा नहीं थी। हाँ, वो एक कमी मुझे लगी। मैं यही कह रहा था कि आपने एक स्लिप लगा के चले शुरुआत में, अगर ये 2 स्लिप लगा के चलते, 3 स्लिप भी लगा के चलते तो इनको और हो सकता है कि पहली गेंद पर कैच छूटा। हाँ, वो भी विकेट कीपर के हाथ से। वो जो कैच छूटा टीम साउदी का कुशल परेरा ने, तो वो कैच जो है काफी महंगा साबित हुआ यहाँ पर। हालांकि अगली गेंद पे दूसरे बल्लेबाज उस पर जरूर आउट हो गए, लेकिन वो जो कुशल परेरा का कैच है तो आउट हुए। तो बल्लेबाजों की भी कमियां रही कि उन्होंने हवा में ज्यादा शॉट्स खेले, जिस कमी को ये तीक्षाना और मधुशंका ने इन्होंने पूरा किया। बहुत अच्छे ढंग से खेला उन्होंने, 1-1, 2-2 रन से पारी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे विकेट पे ज्यादा समय बिताने की कोशिश की। इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि जो भी बल्लेबाज रन बनाए उसको टिकने की जरूरत है। अब राकेश, आपकी बात को आगे ले जाते हैं। रविंद्र जी, आपको लगता है कि
अब न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट से मैच को जीता जाए, क्योंकि समय की उनके पास कोई कमी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बारिश का भी आ सकता है, क्योंकि इस समय 90 से 100% के बीच में प्रेडिक्शन है। लेकिन न्यूजीलैंड चाहेगी इसको जल्दी निपटाना, क्योंकि एक तो इनको जल्दी रन करने से पाकिस्तान पर प्रेशर बहुत पड़ेगा। जिस तरह से बीच में भी कैलकुलेशन आ रही थी, अगर ये 25 ओवर के 30 ओवर के बीच में मैच खत्म करते हैं तो लगभग 200 रन की मार्जिन से पाकिस्तान को हराना पड़ेगा। टेंटेटिव जो भी कलेक्शन, जो भी इनकी कैलकुलेशन थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जीतना। और ये मैचों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बारिश आने पे डीएलएस भी हो सकता है। आपने देखा था न्यूजीलैंड का पिछले मैच में पाकिस्तान 400 रन करके भी न्यूजीलैंड हार गया था। तो इस समय सबसे बड़ा पहले इनको 2-4 ओवर, क्योंकि इनके जो पहले 5-7 ओवर लगेगा विकेट न दें, उसके बाद ही अटैक करेंगे, 100% अटैक करेंगे और जल्दी से निपटाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 171 रन पे ये लोग मैच इनके हाथ में ही है। फिलहाल विकेट में कुछ ऐसा नहीं है। श्रीलंकन बैट्समैन ने अपनी गलती करी है। मुझे नहीं लगता कि शायद न्यूजीलैंड इस गलती को रिपीट करेगा। और राकेश, रचिन रविंद्रा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, काफी हद तक वो छुपे रुस्तम से साबित हुए हैं। 500 से ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं। तो आज एक बार फिर उन पर दारोमदार, देखिए काफी बड़ा दारोमदार रहेगा। युवा बल्लेबाज हैं और इस वर्ल्ड कप में युवा सनसनी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 523 रन, 3 शतक वो लगा चुके हैं और उनकी बल्लेबाजी सभी को प्रभावित कर रही है। बहुत अच्छी जिम्मेवारी के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, सबको देखने में भी बड़ा आकर्षक लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिम्मेवारी के साथ इस मैच में उनको जो टीम की जरूरत है कि आपको विकेट पे भी टिकना है, रन भी बनाने हैं। देखिए, रन बनाने के लिए क्या है कि जो बॉल आपको रन बनाने वाली मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी गेंद को सम्मान दीजिए और खराब गेंद को बुरी तरह से वो पीटिए, उस पर रन जितना हो सकता हो आपको मैक्सिमम उसका इस्तेमाल करना है। वो एक बहुत बड़ी चीज है। और रचिन रविंद्रा के पास इस समय मौका है। गेंदबाजी में तो वो खास करिश्मा कर नहीं सके, लेकिन बल्लेबाजी में इस समय आज उनके पास मौका है जब टीम को जरूरत है सख्त। और ये देखिए उनका लास्ट चांस है। अगर इस मैच में चूके तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनको हर हालत में यहाँ पर रचिन रविंद्र हो, जो भी बल्लेबाज आ रहा है, उसको जिम्मेवारी के साथ तेज तर्रार क्रिकेट, लेकिन पहले अपनी विकेट बचाइए। पहले 10 ओवर आप खेलिए ढंग से और अच्छे रन आप बना सकते हैं। दूसरी टीम ने अगर 74 रन 10 ओवर में बनाए तो आप भी बना सकते हैं। आप तो 80 बना सकते हैं, 100 भी बना सकते हैं। लेकिन अच्छी भली चलती लय को किस तरह से खराब किया जाए, या फिर अपनी फॉर्म को ना बरकरार रखते किस तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कुशल मेंडिस। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान, उन्होंने देखिए स्टैट जो दिया है पिछली 9 पारी में कुशल मेंडिस का 76 रन 122 रन, लेकिन उसके बाद 9, 11, 11, 39, 19, 6। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से फॉर्म गायब हो गई? देखिए, ये जो पहले स्टैट दिए हैं, जो पहले 76 और 122 हैं, तब वो कप्तान नहीं थे जी। उसके बाद कप्तान बनाया गया। उसके बाद 9, 11, 11, 1 का स्टार्ट। ये कैप्टनसी प्रेशर होता ही है। कैप्टनसी उनको इतनी आदत नहीं थी। ये आप देखिए वर्ल्ड कप के टीम के बीच के दौरान ही इनको कप्तानी चेंज कर दी गई। ये टीम का मोराल क्या डाउन हो गया। उसके बाद इनका लास्ट मैच में जो एंजेलो मैथ्यूज का जो इंसिडेंट हुआ, ये अभी तक वो इंसिडेंट को लेके चल रहे थे। सुबह आते ही पहले जो कमेंट्स हुए, तो कुशल मेंडिस एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर है, लेकिन इस समय मेरे हिसाब से इनको कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी। जो कि बहुत, उनको कप्तानी देने से उनको जो बैटिंग होगी अंडर प्रेशर होगी। एंजेलो मैथ्यूज सीनियर प्लेयर थे, ऑलराउंडर है, उनको कप्तानी देनी चाहिए थी एंजेलो मैथ्यूज को। और कुशल मेंडिस को बिल्कुल केयर फ्री छोड़ना चाहिए था कि आप अपनी बैटिंग पे ध्यान दो। यही हाल बाबर का हो रहा है पाकिस्तान में। पहले विराट कोहली के साथ यही था, लेकिन आप देखिए जैसे विराट कोहली को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उनका रिकॉर्ड देखिए। ऐसे ही अब वही आ रहा है कि बाबर को हटाओ। अच्छे प्लेयर्स को आप ये नहीं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा तो कप्तान बना दो। एक अच्छा बैट्समैन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कप्तान साबित हो। तो ये मुझे लगा कुछ इसी कारण ये कुशल मेंडिस की जो फॉर्म रही, इसका ही दिक्कत यही रही। राकेश, काफी कुछ सुनने को मिल रहा है कि टीम सेट नहीं हो पाई जब से पुराने प्लेयर गए हैं, लेकिन वो एक जमाना हो गया उन्हें गए हुए। और ऐसा नहीं है कि इस टीम में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 मैचेस खेले। इन्हें भी बहुत अनुभव है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो अब एशिया कप के फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में क्या उनकी स्थिति रही, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मानसिक रूप से इनको मजबूती दे सके कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। अब कप्तानी के भार में देखिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज कप्तान बनते हैं, है ना। तो उनकी तो बल्लेबाजी अगर इस तरीके से चरमराने लग गई तो कोई कप्तान बनने को तैयार ही नहीं होगा। केन विलियमसन को देखिए, हाँ। पिछले मैच में क्या जबरदस्त वापसी की उन्होंने। बिल्कुल, चोटों के बाद उभर कर आए, 2 मैच खेले, दोनों में उन्होंने रन बनाए हैं। कहीं 70+ रन बनाए, कहीं 95 बनाए, तो वो अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने भी पहले अच्छा किया था। लेकिन आप देखिए क्या है कि जैसे अभी रविंद्र जी ने एंजेलो मैथ्यूज की बात की। एंजेलो मैथ्यूज तो ओरिजिनल टीम में सिलेक्ट ही नहीं था, वो तो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। तो ये या तो उनको सिलेक्ट ना करके वो उस समय फिट नहीं थे इसलिए सिलेक्ट नहीं किए गए,
या फिर कोई और कारण था। तो श्रीलंका की क्रिकेट जो खराब हो रही है ना, उसके पीछे मैदान के बाहर के बहुत से कारण हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, जो आप रिजर्व के तौर पे खिलाड़ी घर पे छोड़ के आते हैं, उन्हें भी पूरा मैच खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। और इतनी रिप्लेसमेंट इनकी हो गई कि उनसे उभर पाना और टीम का जो एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो इनका कभी बन नहीं पाया इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये वर्ल्ड कप भी इनको एक अच्छा सबक दिख जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का इनको मौका मिलता है तो शायद 2025 में हम इनका बदला हुआ रूप देखें उस टूर्नामेंट के अंदर। और चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले जुड़ते हैं अपने लिसनर से, बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो सर जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर मैं लखन गुजर बात कर रहा हूँ, राजस्थान अलवर से। जी फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 30 ओवर के अंदर हरा देती है तो पाकिस्तान को अपनी रन रेट ठीक करने के लिए इंग्लैंड को कैसे हराना होगा? जी अभी तक तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा रन के मार्जिन से हराना होगा, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे इस पर। और एक और लिसनर से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं अजय धोपावकर बोल रहा हूँ, अहमदनगर महाराष्ट्र से। जी अजय जी कहिए। तो न्यूजीलैंड का आज जितना जीतेगी ऐसा लगता है जी, तो उन्होंने कितना रन रेट रखना चाहिए पाकिस्तान से ज्यादा रखने के लिए? जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र जी, यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मली भी गेम खेलेगा न्यूजीलैंड, सबसे पहले तो पॉइंट्स की बात आती है, उसके लिए रन रेट अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, पहले इनको 5-7 ओवर इनको विकेट्स रोकनी है कि मैच को अपने हाथ में लेना है। 170 रन तो कभी बन सकते हैं। आपने देखिए श्रीलंका ने 130 रन पे 9 विकेट गंवाने के बाद भी 170 बना दिए। 170 रन को बड़ा टारगेट नहीं है। मेन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स यही हैं, एक तो बारिश का फैक्टर, ये देखना पड़ेगा। बारिश ठीक है तो, लेकिन फिर भी पहले 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर आप 2 पॉइंट रन रेट के चक्कर में ये ना हो कि मैच गवा दे, क्योंकि ये वैसे तो श्रीलंकन की टीम ऐसी जो बॉलिंग अटैक है, इतना कुछ अभी उसमें पैनापन है नहीं कि वो आउट कर सकें। लेकिन जो पहले 4-5 ओवर देखे, लेकिन इनके कॉन्वॉय जो है वो पिछले 7-8 मैचों में नहीं रन कर पाए। और रविंद्र अश्विन जो कि बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और हिसाब से अगले जो बताया जा रहा है कि अगले डिकेड के सुपरस्टार भी हो सकते हैं। इनकी बैटिंग और वो कैन विलियमसन तो आप जानते हैं कि बैकबोन है इस टीम की। मुझे नहीं लगता कि इनकी बैटिंग में दिक्कत आनी चाहिए। मेन ये देखते हैं कि कितने ओवर पूरा करते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना डिफिकल्ट टारगेट ही सेट करके जाते हैं। और चमिका करुणारत्ने को राकेश आज टीम में शामिल किया गया, उनके आने से गेंदबाजी कितना मजबूत होगी श्रीलंका की? देखिए वो तो पता चलेगा जब वो गेंदबाजी करने उतरेंगे कि किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। और क्योंकि आप देखिए कि जब किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो उसको उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन और जब कोई खिलाड़ी ये देखता है कि उसके निचले क्रम के बल्लेबाज इतनी दृढ़ निश्चय के साथ खेल रहे हैं तो गेंदबाजों में भी एक अलग लहर आती है कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा किया जिनसे उम्मीद नहीं थी, और वो अगर अच्छा कर सकते हैं तो हमें अब उनके प्रदर्शन को सफल बनाना है। तो ये कोशिश होगी और श्रीलंका की सिर्फ यही बड़ी कोशिश होगी कि इनके विकेट लिए जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो 25-30 ओवर खेलेंगे तो वो मैच जीत सकते हैं। तो विकेट लेके ही वो कामयाब हो सकते हैं। और जो अगर मान लीजिए बारिश की संभावना बनती है तो जो डीएलएस का जो आपका एवरेज चाहिए होगी वो इनको शुरू से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। वहां इनको पाकिस्तान से सबक सीखना होगा कि फकर जमा ने जैसे हमेशा पाकिस्तान को आगे रखा था, तो जब डीएलएस के तहत मैच बिल्कुल रुक गया तो उसमें वो आगे थे रनों से। तो यहाँ पे ये चीज न्यूजीलैंड को यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि इनको पता है भाई कि हम 401 रन करके बारिश की वजह से मैच हार गए थे। तो आज न्यूजीलैंड की ओर से फकर जमा का रोल कौन अदा कर सकता है? कॉनवे और अश्विन दोनों ही, क्योंकि 20 ओवर होने बहुत जरूरी है। 20 ओवर से पहले कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। बारिश में ये ध्यान रखना पड़ेगा इनको। 20 ओवर होने जरूरी है। उसमें देखिए 20 ओवर से पहले हो गया नेचर, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इनको ये टारगेट रखना पड़ेगा कि हमें 20 ओवर में कम से कम, अगर डीएलएस में भी 171 भी चलते हैं, डीएलएस में भी करेंगे तो ये 20 ओवर में 150 रन बनाने के आराम से कैपेबल हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। विकेट बहुत बढ़िया है और इनकी बैटिंग जो चल रही है, रविंद्र अश्विन जो फॉर्म में चल रहे हैं वो बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए इस समय। और मिचेल सेंटर का रोल आपको लगता है कि आज अगर कुछ विकेट गिरते हैं तो फिर मैक्सवेल जैसा ही होने वाला है? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जो डैरिल मिचेल हैं वो 375 के करीब रन बना चुके हैं, तो वो काफी अटैकिंग बल्लेबाज हैं। उनको भी यहाँ पर भूमिका निभानी होगी और सभी को जो भी खेलेगा। आप देखिए सिचुएशन कैसी बनती है। अगर शुरू में 10 ओवर में आप हो सकता है कि 80 रन बना लें, लेकिन विकेट को बचा के रखेंगे तो इनका फायदा रहेगा। तो यहाँ पर एक चेतावनी सी दी है
राकेश थपलियाल ने कि विकेट भी बचाएं और रविंद्र ने भी एक चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का ख्याल मन में ना लाएं और अच्छी रन गति से रन बनाते रहें। रविंद्र जी और राकेश थपलियाल जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और फिलहाल मैं आदेश कुमार गुप्त, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पाराशर के साथ लेता हूं आपसे विदा। अब आपसे मुलाकात होगी प्लेयर ऑफ द मैच में, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कौन बनेगा विजेता? This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, स्वागत है आपका। 172 रन का लक्ष्य दिया है श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड के दोनों आरंभिक बल्लेबाज रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे इस समय बीच मैदान में। एक बड़ी चुनौती जो दूधिया रोशनी में ये स्टेडियम नहाया हुआ है, लेकिन आसमान में थोड़े बादल भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा, ये प्रश्न तैरता हुआ इस समय। कॉनवे खेलने के लिए तैयार है। डेवन कॉनवे 9 मैचों में 314 रन बना चुके हैं, 1 शतक जड़ चुके हैं, जो कि उन्होंने 152 रन बनाए थे पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद आज उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक पूरी तरह से उत्साहित और काफी अच्छी संख्या में भीड़, ये देखते हुए कि मैच भारत का नहीं है। उसके बाद भी 23 वर्षीय रचिन रविंद्रा 523 रन बना चुके हैं 9 इनिंग्स में, और 3 शतक इस विश्व कप में जड़ चुके हैं। क्या कुछ कर पाएंगे इस मैदान में? बहुत सारा प्रश्न इस समय हवा में तैरता हुआ, दूधिया रोशनी में ये नहाया हुआ खूबसूरत स्टेडियम। दिलशान मधुशंका पर जिम्मेदारी दी है कप्तान मेंडिस ने कि पहला ओवर वो बीएमएल एंड से शुरू करेंगे, और उनके लिए फील्डिंग 2 स्लिप पॉइंट कवर, एक हाँ सीमा रेखा के पास, क्योंकि साइड स्क्रीन लगी हुई है, पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है टीवी की, उससे हमें दिखाई नहीं देता कई बार, लेकिन फिर भी अंदाजे के बाद हमारे को कंफर्म किया नंदन ने। और दिलशान इस समय शारीरिक अभ्यास करते हुए, चुस्त दुरुस्त करते हुए अपने को कि 172 रन बनाने हैं, 3.44 की औसत। नंदन, बहुत आसानी से कुछ हो सकता है, क्या सोचते हैं आप? As it looks, New Zealand should get there pretty comfortably. There's no pressure on them. The Sri Lankan bowling is not lethal, but then, as we say, it's a game of cricket. A couple of early wickets can send jitters down the New Zealand batting lineup. दिलशान मधुशंका गेंदबाजी करने के तैयार, बाएं हाथ से पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। पूरा सम्मान दिया, कॉनवे ने कोई प्रयास नहीं किया। बहुत शांति से खेलना है, आराम से पारी को गढ़ना है, और जहां कमजोर गेंद मिले आपको स्ट्रोक्स खेलने हैं, ताकि रन भी बनते रहें और आप पर दबाव भी न पड़े। 0 इस समय अंकित होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। न्यूजीलैंड को अपनी पारी की शुरुआत करनी है। 1 गेंद अभी तक हुई है। मधुशंका, दिलशान मधुशंका बीएमएल एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अपने ओवर की दूसरी गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो तो विकेट। पूरा सम्मान दिया, आखिरी क्षण तक बल्ले पर देखा, और उसके बाद जैसे ही पॉइंट पर फील्ड होती हुई देखी, शॉर्ट पॉइंट पर झपटते हुए वापस अपने इरादों को बदला, रन ले लेंगे। और 2 गेंद हुई है, और आपस में विचार विमर्श करते हुए कॉनवे और रविंद्रा कि भाई 2 गेंद में बहुत मंत्रणा करने की जरूरत हो गई। कॉनवे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 152 रन, 32 रन, 45 रन, 20 रन, फिर उसके बाद 0, 28, 2 और 35। अब तक के 8 मैचों में ये उनका स्कोर है। 1 शतक। क्या कुछ वापस कर पाएंगे?
दिलशान मधुशंका गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई। और जब एक खिलाड़ी कमेंट्री कर रहा होता है तो उसका हाथ अपने आप गेंद की दिशा देता है। नंदन को देखने में मजा आता है जब बॉलर या बैट्समैन कोई स्ट्रोक लेता है, और नंदन भी अपने आप को कमिट कर चुके होते हैं। There's nice shape on his deliveries. He's trying to get the ball to move away from the left-hander. There are two slips in place plus the wicket-keeper. So if he gets his line right, there's always a chance of a nick behind the wickets. क्या ऐसा होगा? क्या घूमती हुई गेंद परेशान कर पाएगी, भ्रमित कर पाएगी कॉनवे को, या कोई चौका जड़ के वो अपने आत्मविश्वास को टटोलेंगे? दिलशान मधुशंका चौथी गेंद लेकर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर तेजी से पॉइंट पर फील्ड हुई, कोई रन नहीं। पूरा सम्मान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 172 का स्कोर पहाड़ हो जाएगा यदि शुरुआती दौर में 1-2 विकेट चटक गए तो। इसलिए मनोबल न चटके, इसके लिए जरूरी है कि आरंभिक बल्लेबाज लंबी पारी खेलें, 10-15 ओवर तक ठहरें। क्यों वेंकट मौन स्वीकृति देते हुए दिलशान, लंबा उनका बॉलिंग रनअप, फील्डिंग की जमावट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, एक स्लिप, गली, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ और डीप थर्ड मैन पे एक ऑफ साइड की ये फील्डिंग है। ऑन साइड पे आएंगे, इस बार ड्राइव किया, पुल किया उसको तेजी से मिड विकेट की तरफ, 4 रन, कोई खिलाड़ी नहीं है। मैंने कहा था अपने आत्मविश्वास को टटोल रहे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, खूबसूरत शॉट, 4 रन। I think that is poor thinking from Madhushanka because he had kept Conway guessing outside the off stump. He has the field set there for the ball which is moving away, and at his pace bowling short doesn't really make sense. भाई एक्सपेरिमेंट मत करिए, आपने इतने रन नहीं बनाए हैं कि आप उसमें कोई प्रयोग कर पाए। जब आपने ऑफ साइड के लिए स्ट्रांग फील्डिंग रखी है, मूवमेंट आप ऑफ साइड से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं गेंदों को, तो अंदर आती हुई गेंद की दुर्दशा होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 रन के साथ कॉनवे का हौसला बढ़ता हुआ, मधुशंका की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई, छोड़ा उसको आखिरी क्षण तक, यही करना था आपको 6 गेंदों में। 1 ओवर की समाप्ति 4 विकेट के नुकसान पर। कॉनवे 4, रविंद्र 0, 172 के मुकाबले। So as we expected, Mukul spin from the other end. Or is it? Yes, there is spin from this end. Tikshana. Yes. 2 left-handers out in the middle, the off-spinner being introduced. This would be interesting if he manages to get the amount of bounce and turn that Santner got. Then it will be a challenge for the New Zealand openers. इस पिच में उछाल मिलती है, तेजी मिलती है, और सेंटनर को देखते हुए श्रीलंका के कप्तान ने सोचा कि भाई मैं भी स्पिन को आजमाता हूं, क्या पता अगर टर्न मिलनी शुरू हो गई तो मजा आएगा। सो इस प्रयोग को करते हुए बजाय उन्होंने दोनों छोर पे तेज गेंदबाज लगाने के एक में ऑफ ब्रेक गेंदबाज को आमंत्रित किया, तीक्ष्णा, जो कि बल्ले से बहुत कुछ दिखा पाए थे। आखिरी उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी। उनके सामने रचिन रविंद्र, पहली दफे इस समय यहाँ के दर्शकों को श्रीलंका के खिलाफ रचिन को देखने का मौका मिल रहा है। अच्छी गेंद बजाय अंदर आने के बाहर की तरफ निकलती हुई, ऑफ ब्रेक नेचुरल, और कोई रन नहीं, कोई स्कोर नहीं। रचिन रविंद्र ने पूरा सम्मान दिया उसको, और अब खेलने के लिए तैयार। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लंबा उनका बॉलिंग रनअप, ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की तरफ निकलती हुई, ऑफ ब्रेक, और सम्मान देते हुए इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला। अगर ये आरंभिक जोड़ी होती और मैच शुरू हुआ होता तो ये स्वाभाविक खेल खेलते, लेकिन अभी इन्हें पता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 172 रन है, इसलिए हमें बहुत संयम और धैर्य के साथ खेलना है। स्लिप एक मात्र नजदीकी क्षेत्र रक्षण में, और थर्ड मैन पर हैं, पॉइंट पर हैं, कवर पे हैं, और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया। स्क्वायर लेग एम्पायर के पास से तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन ले चुके, जब तक कि थ्रो पहुंचता वहां पर फील्डर द्वारा विकेट कीपर के ग्लव्स में 2 रन से संतुष्ट रचिन रविंद्रा ने अपना खाता खोला। 2 रन बने उनके, 4 रन पर है कॉनवे। न्यूजीलैंड 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर का खेल हुआ है। दूधिया रोशनी से जगमगाता, लेकिन हमारे ठीक सामने काले काले बादल गहराई से आसमान को छूते हुए
तीक्ष्णा की गेंद कट करना चाहते थे, पॉइंट पर तेजी से फील्ड हुआ, मिस फील्ड हुआ, झपट कर नीचे गिरे थे, लेकिन उसके बाद उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। थ्रो पहुंचा 2 रन से। श्रीलंका ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास 172 का स्कोर है मात्र। Mukul, this is also going to be the difference between the two sides. We saw New Zealand who were excellent in the field as far as the ground fielding was concerned, but New Zealand already a bit sloppy. श्रीलंका की संपूर्ण परीक्षा, जिसमें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर तरह से उनकी परीक्षा हो रही है। तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती है, हल्के से उसको पुश किया, कवर पर तेजी से फील्ड हुई, कोई रन नहीं। कुशल परेरा ने जो मिस फील्ड किया था, उसके बाद से श्रीलंकाई कप्तान अपने खिलाड़ियों को बराबर चेताते हुए कि भैया संभलो, ताली बजाकर उत्साहित करते हुए, फील्डिंग को परिवर्तित करते हुए, खिलाड़ियों को बस थोड़ा सा दाएं बाएं करते हुए डीप मिड विकेट पे थोड़ा स्क्वायर लेग एम्पायर के पीछे खिलाड़ी को, और बहुत खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन। बल्ले से निकलने के साथ सीधा सीमा रेखा को देखते हुए कवर सीमा रेखा से बाहर, 4। 12 रन 2 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड। So a good start for New Zealand then. 12 of the first 2 overs, 2 boundaries already, 1 in each over. Spin introduced by Kusal Mendes in the hope that there might be some purchase for the off spinner against the left-handers. But the first over bowled by Tikshana was not very impressive. He bowls splatter through the air. So if he bowls at that pace, maybe he won't get as much turn. 2 overs gone, 12 for the loss of no wicket. After 2 overs, New Zealand had lost their first wicket already. Here is Madhushanka, left arm over the wicket, into Conway, shot outside the off stump. Conway off his back foot, steers it down to gully. That's very well fielded in the gully. And there is no run. A slip, a gully, a deep third man, backward point, cover point, and a mid-off. That's the field on the offside. A mid on a deep square leg and a short fine leg, the field on the onside. Sri Lanka bowled out for 171. They will have to pick up early wickets in this New Zealand run chase if they are to stay in the game. Madhushanka into Conway, getting the ball to move away from the left-hander. Conway making the late adjustment, plays it quietly out onto the offside. Conway and Ravindra, who started the World Cup with a bang, with splendid hundreds against England in that fantastic run chase. Since then, Conway has not been very prolific, but Ravindra has gone on. He's scored more than 500 runs prior to this game and has been one of the successes for New Zealand and one of the successes. Team is not entirely convinced, though the appeal was there. They're now congregating to try and decide whether to go in for the review, and he does go in for the review. Rather grudgingly, one would say, because we are seeing on the adjoining TV screen where he says he goes for the review and then he says I'm not too sure. That doesn't really inspire much confidence, Mukul. उन्हें लगा कि एक प्रयास कर लें, खोने को तो बहुत कुछ है, कोशिश की जाए, क्या पता विकेट मिल गया तो कितना बड़ा दबाव बन जाएगा। उस सोच से, असमंजस की स्थिति में उन्होंने ये निर्णय लिया। Excellent delivery from Madhushanka, leaving the left-hander. Conway fending at it without moving his feet, and the ball seems to be some distance away from the bat. And the Sri Lankan fielders, having seen it on the big screen, go back to their positions, realizing that it was probably a futile review, a wasted review. A good decision from Joel Wilson. He's had a good day in the field. Even when Sri Lanka batted, there was a review which went his way. नंदन कप्तान है, विकेट कीपर खुद, और काफी नजदीक है, बाकी सबसे वो ज्यादा नजदीक है। बॉलर वो 2 ही देखने की स्थिति में है, तो बहुत असमंजस था। फिर साथी खिलाड़ियों ने उन्हें उत्साहित किया और उन्होंने हाँ कर दी। Probably the bowler had his way. Damage done for Sri Lanka. They've lost one of their reviews, as here is Madhushanka into Conway. That's full and driven down the ground for 4 runs by Conway.
That is adding insult to injury. He was beaten off the earlier delivery. There was a review taken which went New Zealand's way, and following up with a handsome stroke down to long off for 4 runs. बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, बहुत खूबसूरत प्लेसिंग, और लगने के बाद बल्ले के देखिए बीचों बीच बल्ले के निचले हिस्से पे आया और सीधा सीमा रेखा के बाहर. इसे कहते हैं एक अच्छा खिलाड़ी. Beautiful stroke from Conway, not trying to hit it too hard, using the bowler's pace. Plenty of gaps in the field. There is a mid-off slightly wide, and anything played down the ground is always 4. Here is Madhushanka again into Conway. Another very good drive, but this time not as well placed. Going straight to the mid-off fielder. Well fielded there by Chamika. Diving to his left. This is what Sri Lanka need. They need to be sprightly in the field. They need to back up their bowlers. A brilliant run out, an outstanding catch can well turn the fortunes of a game. For the moment though, New Zealand calling all the shots, having bowled out Sri Lanka for 171. They have gone on very quickly to 16 without loss. 3 handsome boundaries, 2 of Conway, 1 of Ravindra. The batters looking fairly comfortable despite the fact that Conway was beaten once. As here is Madhushanka again into Conway. Off the back foot, Conway plays it up to mid-on. Angelo Matthews, the fielder there. Conway thinks of a single, calls Ravindra, but then very quickly sends him back, and rightly so, because the ball had gone straight to Matthews. End of the over then, after 3 overs, New Zealand requiring 172 to win, 16 for the loss of no wicket. क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. A very good crowd in here at the Chinnaswamy Stadium. Considering the fact that this is not an India game, had Sri Lanka batted better, one is sure that there would have been many more people who would have come to the ground. As it stands, there are a considerable amount of people, and they would be hoping that a couple of early wickets fall to make this game interesting. If Sri Lanka do not pick up quick wickets, this match might well get over by the 30th over or so. Having said that, here is Tikshna for his second over. The slip going out now. There's a short third man point cover, extra cover, and a long off. Here is Tikshna into Ravindra, who comes forward, opens the face of his bat, plays it to cover. Asalanka, the fielder there, and there is no run. On the onside, there's a short fine leg, a man on the mid-wicket square leg fence, a mid-wicket and a mid-on. Sri Lanka need wickets. Here is Tikshna into Ravindra, who comes forward and drives it. Half drives, half pushes it up to short extra cover, where it is fielded by De Silva. There is no run. The Sri Lankan batters would be kicking themselves, seeing how good the wicket was and how careless they were when they batted. Here is Tikshna into Ravindra, tossed up almost a full toss. Ravindra not really making full use of it, but manages to drive it down to long off, where it is fielded by Kusal Perera. A single which brings Conway for the first time on strike to Tikshna. Ravindra is 8, so is Conway. Beg your pardon, Ravindra is 9, Conway is 8. New Zealand 17 without loss. New Zealand have batted well in this tournament, barring one hiccup against South Africa. Here is Tikshna into Conway. A half volley driven down the ground by Conway very comfortably. New Zealand do not need to take any undue risks. They are chasing a small total. They have got off to a decent start. There are no demons in the wicket. There is no magic or mystery in the Sri Lankan bowling. All they have to do is pick the balls to hit. Tikshna again, right arm round the wicket. Bowls to Ravindra, flatter through the air. Ravindra trying to make room for himself. Goes off the back foot, trying to punch it through the offside. Doesn't really get hold of it. And it's a thickly populated offside field. So he'll have to place it to perfection to beat that field. Rachin Ravindra, of Indian origins, as Mukul said some time back, has really made a name for himself in this tournament. The next ball from Tikshna is on target. All Ravindra can do is come forward, play it back along the track for Tikshna to field on his follow through. There is no run. End of over number 4. After 4 overs, New Zealand are 18 without loss. In comparison, Sri Lanka were 30 for the loss of
1 wicket, and that is where they imploded from. Mukul, New Zealand going along very comfortably. So 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 9-9 के स्कोर पर दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज हैं। ये सही है कि श्रीलंका ने 4 ओवर में ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद का स्कोर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, ये शुरुआत धीमी है पर अच्छी है। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. देखा, सिर्फ पुश किया, कोई रन नहीं। सो कॉनवे और रविंद्रा दोनों बराबर एक मजबूत शुरुआत देने की कोशिश करते हुए, मनोबल जरूर टूटा था जब रेफरल लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके बल्ले के कहीं आसपास नहीं थी, और उसके बाद दूसरी गेंद में उन्होंने एक चौका जड़ के अपने आत्मविश्वास को वापस बटोरने की कोशिश की। 18 रन 5वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर है, और मधुशंका गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ की गेंदबाजी है और बल्ले का किनारा लेते हुए एक मौका था, सीधे सीमा रेखा के बाहर जरूर गई, लेकिन हवा में हाथ। कप्तान मैंडिस भी सोच रहे हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। चौका जरूर मिला। 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Harsh and unfortunate for Sri Lanka. I think that was a genuine edge. Slashing at that one was Conway getting the outside edge, but the slip fielder is well wide, and that was down first slip's throat, but we have almost a third slip in place. Sri Lanka thinking that the ball would go there, but to their dismay and disbelief. बाईं तरफ छलांग लगाई थी, बल्ले को चूमती हुई, ग्लव्स को चूमती तो स्थिति कुछ और होती। मधुशंका गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ से ऑन साइड में हल्के से धकेला उसको। 1 रन के लिए लॉन्ग लेग जब तक फील्ड होती। 1 रन से संतुष्ट है चमीरा। 2 रन ले लिए उन्होंने, तेजी से दूसरा रन ले लिया। मैं जब तक चमीरा को देख रहा था तब तक उन्होंने 26 गज की दूरी तय कर ली। और हमारे वेंकट बहुत मुस्तैद है, एम्पायर से ज्यादा पैनी निगाहें हैं उनकी, तुरंत हमें बता देते हैं कि भाई आप 1 बोले 2 हो गए। सो स्कोर बढ़कर हो गया इस समय 24 रन। 15 पर कॉनवे, 9 पर हैं रविंद्रा। कॉनवे ने पहले मैच में 152 रन जड़े थे और रविंद्रा ने 123। क्या ऐसा ही कुछ होगा? सम्मान देते हुए ऑन साइड में धकेला उसको, फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी। 4 रन निश्चित रूप से जाएंगे। लंबी दौड़ के बाद भी चमीरा उसको रोक नहीं सकते। बहुत अच्छा शॉट, संयमित शॉट कहेंगे उसको। प्लेसिंग उसकी बहुत अच्छी थी। Beautiful stroke, and he also found probably the slowest fielder on the field in Angelo Matthews, diving to his right. It's a big over for New Zealand. 3 balls gone, 10 runs on the board. Another boundary, and I think it would be very difficult for New Zealand, beg your pardon, for Sri Lanka from there on. 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मधुशंका कहां एक विकेट लेने को तैयार थे, बल्ले को चूमती हुई निकली थी गेंद, लेकिन अगली में चौका जड़ के कॉनवे ने अपनी हिम्मत बढ़ाई। मधुशंका की गेंद, पटकी हुई गेंद, उसको बहुत ही सुंदर उन्होंने पुल किया। 4 रन। खूबसूरत शॉट, लॉन्ग लेंथ सीमा रेखा के बाहर। शॉट ऑफ लेंथ आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को देंगे तो वो तो पैदा ही बाउंसर्स के साथ हुए। Once again trying to unsettle him, probably frustration coming out on Madhushanka's part, banging it in, and as in the first over, Conway putting it away fairly comfortably. There is a man for that, but he's too square, and that ball played fine for 4 runs. So 2 चौकों के बाद कॉनवे का स्कोर बढ़कर हो गया 23-32 पर। न्यूजीलैंड बिना किसी विकेट के जबरदस्त खेल की प्रतीक्षा में यहाँ के दर्शक। कॉनवे तैयार, मधुशंका तैयार। अच्छी गेंद थी, थोड़ी धीमी रहती हुई, पूरा सम्मान दिया उसको, बल्ले से धकेला, कोई रन नहीं। रियल कोच बाहर आया जिसने बताया कि मधुशंका का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया, क्योंकि एक तरफ आप विकेट लेते हो, फिर दूसरी ओर चौका पड़ जाता है। वही फील्डर अगर उसको ढंग से डाइव नहीं लगा पाए तो बॉलर की बेचारे की हर तरफ से धुनाई होती है। बैट्समैन तो करता ही करता है, साथ ही फील्डर भी करते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 32 रन न्यूजीलैंड का स्कोर। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर।
वेंकट बता रहे हैं कि 5 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का 34 for 3 था, 3 विकेट आउट हो चुके थे और यहां पर 0 बॉलिंग में परिवर्तन। मेंडिस सोच रहे हैं कि धनंजय डिसिल्वा को आजमाया जाए। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं। डिसिल्वा गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने रविंद्र 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 23 पर है कॉनवे। काफी बढ़त है उनकी। रविंद्र शांत खेल खेल रहे हैं इस समय। डिसिल्वा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बैकफुट पे गए, ड्राइव किया उसको, फील्डर है वहां पर मौजूद। फील्ड होती, थ्रो होता, जब तक कि तेजी से पहुंचता थ्रो विकेट कीपर के ग्लव्स में समर विक्रमा का, तब तक 1 रन से संतुष्ट। सचिन रविंद्र लंबे कद के खिलाड़ी हैं, 10 रन बना चुके हैं। कॉनवे हैं 23 रन पर। क्या ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज जो लक्ष्य है, जो स्ट्राइक रेट चाहिए आपको, उसे पाने में मदद करेंगे? पहली गेंद, दूसरी गेंद हल्के से उसको स्क्वायर लेग एम्पायर के पास धकेला, तेजी से फील्ड हुई, 1 रन के लिए संतुष्ट। दूसरा रन लेना चाहते थे रविंद्र को समझते हुए, स्पिन को भांपते हुए, लॉफ्टेड शॉट। दर्शनी जिसको कोच की नजर से क्या सोचते हैं? It's a beautiful shot, playing with the turn, realizing that the mid-off fielder was in the circle. So even if it was a miss hit, it would still beat the fielder. But he played it to perfection, clearing the boundary comfortably. Beautiful shot from Ravindra. लॉन्ग ऑफ पर 6 रन के बाद रविंद्र अभी 16 पर पहुंच गए। 24 रन पर है इस समय कॉनवे। डिसिल्वा 8 रन दे चुके हैं इस बार हवा में, लेकिन फील्डर से काफी दूर। मिस टाइम हुआ इस बार। उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन ढंग से नहीं ले पाए। गेंद की स्पिन ने उनको धोखा दिया, उछाल ने धोखा दिया। 41 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिना किसी विकेट के नुकसान पर कितना अच्छा लग रहा है 41 रन। 34 पे 3, उसके बाद ढेर होती हुई श्रीलंका। डिसिल्वा और इस बार ड्राइव किया, लेकिन फील्डर मौजूद है। तेजी से उन्होंने फील्डिंग की और थ्रो किया जब तक कोई प्रयास नहीं था रन लेने का, क्योंकि पता था कि मजबूत फील्डर हैं तो उनको धोखा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ऐसा लंका और ऑन साइड में इस बार धकेल कर 1 रन के लिए तेजी से दौड़ पाए। 2 फील्डर हैं लेकिन दोनों के बीच में हल्के से प्लेस किया। ओवर समाप्त हुआ 6 ओवर 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कॉनवे है 25 पर, रविंद्र है 17 पर। Sri Lanka scored at 7 runs and over in the power play. New Zealand emulating them, but Sri Lanka lost 5 wickets, scoring those 70 odd runs. New Zealand are 42 without loss in pursuit of 172. They are off to an absolute flyer. One edge going down to third man, just past the outstretched gloves of Kusal Mendis. But apart from that, it has been all New Zealand. Both Conway and Ravindra have looked very, very good, very confident, very assured. And the Sri Lankan bowling has not really looked threatening at all. De Silva and Tikshna, the 2 spinners used by Kusal Mendis already, and both going for runs. Tikshna 2 overs, 10 runs. De Silva 10 runs off his 1 over. As here is Madhusanka continuing from the BEMLN into Conway. Conway comes forward and drives it handsomely, but only up to mid-off, where it is fielded and there is no run. As we have been saying repeatedly, Sri Lanka need wickets. Without wickets, there is no chance that they can get anything out of this game. New Zealand would win this at a canter and almost cement their place in the semi-finals, because their run rate, net run rate was already very good. But with such a big win against Sri Lanka, it would only get better. And then Pakistan would have to win by a very, very big margin against England if they are to challenge for a place in the semi-finals, as the next ball is driven handsomely through the covers for 4 runs. Glorious stroke from Conway, Mukul. बहुत ही खूबसूरत ड्राइव। उन्होंने 2 लॉफ्टेड शॉट मारे थे, लेकिन इस बार कवर में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने चौका जड़ा। स्कोर हो गया उनका 29। Very high percentage of boundaries. Venkat tells us this is already the 6th boundary of the innings, and we are only in the 7th over. Beautiful stroke from Conway, slightly overpitched, a bit of room outside off stump, and in modern day cricket that is enough to invite the batter to go for an expansive drive. Here is Madhushanka into Conway, going for the slower Yorker this time, missing it. Conway gets a half volley and drives it through the onside this time for back-to-back boundaries.
The 50 of the New Zealand innings also comes up in the 7th over. We'll have to wait for Venkat to tell us when did Sri Lanka get their 50. It was in the 6th over, so they were faster there, but for the loss of 3 wickets. New Zealand have got to the 50 in the 7th over without losing a wicket. And Sri Lanka look fairly demoralized in the field now, shoulders dropping already, realizing that just another 120 runs to get with plenty of overs and all 10 wickets intact. Madhushanka, who had a very expensive last over, already conceding 2 boundaries in this over. The next ball, Conway playing it up to mid-on, Angelo Matthews, the fielder, and there is no run. For New Zealand, Williamson will come in at number 3. A very strong New Zealand batting lineup. Daryl Mitchell, Mark Chapman, Glenn Phillips, Tom Latham, all to follow. The New Zealand tail also is much stronger than the Sri Lankan one, with Mitchell, Santner, Lockie Ferguson, Tim Southee and Trent Boult. The slip coming out now, so there is a deep third man, a deepish gully, point, cover and a mid-off. Here is Madhushanka, left arm over the wicket. Into Conway. Conway plays it up to mid-on, go through for a very quick single to Ravindra and Conway. Started a little late, but in the end making it comfortably. The mid-on fielder had to move about 10 yards to his left to do the fielding. Or Matthews at mid-off, at mid-on rather, would have had to move equally to his right. The mid-off fielder was quicker to it, but the batsmen were much quicker. A single to Conway takes him up to 34. Sri Lanka go up to 51 for the loss of no wicket. Conway 34 of 27 deliveries, 7 boundaries. Ravindra 17 of 14 deliveries, 1 boundary. So once again a very good opening partnership between Conway and Ravindra. Ravindra for the first time facing up to Madhushanka. Here is Madhushanka into Ravindra, beats him outside the off stump. That's well bowled. Ravindra going for the drive, misses. Fortunately for him, there was no outside edge. The ball goes through to Kusal Mendes. End of another expensive over for Madhushanka then. 4 overs, no wicket for 31. And at the end of 7 overs, New Zealand in pursuit of 172 are 51 for the loss of no wicket. There has to be something from somewhere, Mukul, if this game is to become interesting. नंदन, आप प्लेयर्स का नाम पढ़ रहे थे कि कौन कौन आने वाले हैं. मुझे लगा उनकी जरूरत होगी या नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको मौका मिलेगा इस दूधिया रोशनी में पवेलियन छोड़ने का. लेकिन बहुत मजबूत शुरुआत. और कॉन्वे ने जो 2 चौके जड़े, एक तो कवर ड्राइव दिया, दूसरा उनके यॉर्कर एकदम पैरों पे था, अपने आप को पोजीशन किया और बहुत सुंदर उन्होंने ऑन साइड में रिटर्न किया. तो वो एक मजबूत और अच्छे खिलाड़ी का समय प्रदर्शन. De Silva starting a fresh over. First ball is driven down the ground by Conway. Too long off, where the fielding is completed by Karun Ratne. A single to Conway takes him up to 35. New Zealand on to 52 for the loss of no wicket. Dhananjay De Silva, right arm off spin, runs in to bowl to Ravindra. Good ball, middle of an off stump. Ravindra comes forward, gives it the respect it deserves, plays it back along the track, and there is no run. There was forecast of rain today, but so far it has stayed away. As the next ball is hit over mid-wicket into the stands for 6. Beautiful stroke from Ravindra. That's the longer part of the ground, mind you. But Ravindra was very sure of what he was doing. There was a fielder right there, Mukul, but he was so sure of that stroke that ball went about 8-10 rows back into the stands for his second 6. इसलिए पिछली गेंद में पूरा सम्मान दिया था. कुछ परेशान भी हुए थे, अंदर आई थी, इस बार मिड विकेट पे 6. What can De Silva dish up now? Here is Ravindra off the back foot, plays it between cover and extra cover to the cover boundary for 4 runs. New Zealand toying with this Sri Lankan attack at the moment. Boundaries coming at will in the air and along the ground as well. A couple of 6s to boot. Kusal Mendes bereft of ideas. He's trying what he can. He's putting the field that he thinks will make an impact. The bowlers are trying honestly, but the wicket is a good one. The score is a small one. And the New Zealand batters are full of confidence. The next ball once again is played respectfully by Ravindra up to mid-on. Tikshna the fielder, and there is no run. 9 runs came of the last one, 14 of the one before that, 10 already of this one.
11 of this one, make it 12 as Ravindra comes forward and drives it down to long off. Karun Ratne, the fielder, another single to the New Zealand total. At the end of 8 overs, New Zealand scoring just short of 8 runs per over. Are 63 for the loss of no wicket. 35 is... जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। 8 ओवर 63 रन, 20 ओवर 172 रन। नंदन कह रहे हैं कि 20 ओवर तक चलेगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन इस समय दोनों आरंभिक बल्लेबाज जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए चौके छक्के 551 रन बना चुके हैं। रचिन डीकॉक से आगे, विराट कोहली से भी आगे। क्या कुछ कर पाएंगे इस समय श्रीलंकन? क्या जोड़ी को तोड़ेंगे? चमीरा को लाया गया है, मेंडिस अपने तरकश के सारे तीर आजमाते हुए, लेकिन दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बाएं हाथ के जम के खेल रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, कमजोर गेंदों को ढूंढ रहे हैं और सीमा रेखा के बाहर दिखा रहे हैं। चारों तरफ मैदान में अपने हस्ताक्षर दिखाते हुए चमीरा की पहली गेंद अंदर आती हुई उछाल लेती हुई पूरा सम्मान दिया। कोई रन लेने का प्रयास नहीं किया रविंद्रा ने। हालांकि 28 रन बनाए 21 गेंदों में और 28 गेंदों में 35 रन बनाए हैं कॉनवे ने। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी मजबूत शुरुआत देते हुए और पेशानी पे बल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बल्लेबाज इस तरह से खेलते रहे तो 20 ओवर में लक्ष्य बहुत आसानी से संभव होगा, ऐसा नंदन भी कह रहे हैं। रचिन रविंद्रा 123, 116, 108 3 शतक जड़ चुके हैं और गजब का प्रदर्शन उनका इस समय चमीरा के सामने। बल्लेबाजी करने को तैयार चमीरा, दाएं हाथ की गेंदबाज ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करना चाहते थे, उलझती हुई बल्ले से थ्रो सीधा पहुंचा स्टंप्स पर। हालांकि लग नहीं रहा ऐसा कि रविंद्रा पहुंचे नहीं हो, काफी तेज दौड़ लगाई थी वो, बहुत आत्मविश्वास में। हवा में जरूर श्रीलंका के खिलाड़ियों के हाथ उठे थे। नंदन He ran as soon as he hit the ball, so he knew that there was a run in that. Good fielding at mid-off though, but from the body language of the Sri Lankan fielders, one feels that he was well inside the crease, and the replay shows that as well. उत्साह की लहर दर्शक दीर्घा से भी दौड़ती हुई न्यूजीलैंड के समर्थन में, और इस रन बढ़कर हुए 63 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 35 पर कॉनवे, 28 पर है रविंद्रा। सामने है इस समय बल्लेबाजी करने को तैयार। इस बार रोका नहीं किसी गेंदबाज को, जबकि श्रीलंका के वक्त 6 बार ऐसा हुआ था। चमीरा गेंदबाजी करने के तैयार, स्टंप्स के पास से ये गेंद अच्छी आती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई ग्लोव्स पे टकराई, कॉनवे के हाथ झंझना गया उनका। ग्लोव्स अब उतार के वो टटोल रहे हैं, समझने में सफल नहीं हो पाए। अच्छी गेंद थी, बीट करने में सफल हुई कॉनवे को, और 35 रन पे खेल रहे हैं। तेजी से उछलती हुई आई थी, बल्ले पर आई थी, लेकिन झन्नाहट जो उसकी होती है बल्ले की, वो ग्लोव्स और हाथ को महसूस हुआ। बहुत तेज गेंद थी इसका मतलब। कॉनवे अब खेलने के लिए तैयार। क्या करेंगे इस गेंद में? प्रश्न। हवा में तैरता हुआ, दूध या रोशनी में न आया हुआ ये खूबसूरत स्टेडियम बंगलुरु का। चमीरा की गेंद ऑन साइड पे, उसको कलात्मक तरीके से खेलना चाहते थे कलाइयों का इस्तेमाल करके, जबकि हाथ झन्नाया हुआ है तो भैया कलाइयां चलेंगी हुई, नहीं चली। 64 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 8.4 ओवर का खेल हो चुका है। ट्रेंट बोल्ट ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और श्रीलंका भी चाह रही है कि जो उनके तेज गेंदबाज हैं वो कुछ कर पाए। चमीरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 64 रन स्कोर है इस समय न्यूजीलैंड का। 172 का छोटा सा लक्ष्य कह सकते हैं अभी। दाएं हाथ के गेंदबाज, लंबा उनका बॉलिंग रन अप, अच्छी गेंद फिर अंदर आती हुई अपने शरीर से परे झटकने की कोशिश में लगा है। फिर दूसरी बार मुझे लगता है ग्लोव्स में इस बार लगने में सफल हुई। नंदन काहे परेशान हो रहे हैं इतने कॉनवे? I think the lanky fast bowler is managing to get some bounce of the wicket, which is hitting the ball on the higher part of Conway's bat, and that is jarring his fingers.
This time, though, it looks like he was hit on the gloves. He's asking for some help from his physiotherapist. So we'll soon see him running in with his medicine bag. One hopes that there's no serious damage to Conway, but certainly he seems to be in some pain. So, दर्द निवारक इस समय मेडिकल टीम मौजूद है. बहुत सारे लोगों की हमने बात की थी कि कितना सपोर्टिव स्टाफ होता है. Curator has to train himself or herself to be as neutral as possible, because every curator makes a wicket which will be a good sporting wicket. Sometimes it works that way, sometimes it doesn't. But on such a wicket, I think the curator would be disappointed if a team is bowled out for 171. 171 में आउट होने के बाद दूसरे जब मजबूत खिलाड़ी हों तो क्यूरेटर और दर्शक सब निराश हो जाते हैं. और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं. ग्राउंड स्टाफ की बात करें, सिक्योरिटी स्टाफ की बात करें, मैच आयोजन से जुड़े लोग हैं, हजारों की संख्या में हैं जो इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं. आकाशवाणी भी जो हम दो बोल रहे हैं वो माइक्रोफोन के थ्रू पहले ट्रांसमीटर पे, स्टूडियो पे जाएगी, स्टूडियो से ट्रांसमीटर पे जाएगी, प्रोड्यूसर से छनती हुई वो जाती है आवाज और फिर आपके रेडियो सेट्स और माइक उस पे मोबाइल पे गूंजती है. तो कितने लोगों का परिश्रम जुड़ा होता है किसी एक मैच में, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे प्रोड्यूसर सुबह से शाम गाड़ियों की व्यवस्था देखते हैं, कमेंटेटर्स समय पर पहुंच जाएं इसकी व्यवस्था देखते हैं, इंजीनियर का दल तकनीकी रूप से एकदम क्वालिटेटिवली ब्रॉडकास्ट हो इसके प्रयास में होते हैं. It is always a team effort and it requires a good leader to make a good team. As we are seeing on the field as well, New Zealand have Williamson, who is a fantastic leader of men, and the team is a very, very good team, and it looks like this team will make it to the semi-finals. Sri Lanka, on the other hand, have been rather disappointing in this tournament. They don't look like they have a very good atmosphere in the dressing room. They have not performed well. The coach Silverwood will have to make some serious changes, or maybe the board will have to make some serious changes going forward if Sri Lanka are to come back as a force to reckon with. So, लीडर पर बहुत सारा श्रेय भी जाता है और बहुत सारा उपालम भी आ जाता है. इंग्लैंड संघर्ष कर रही है, श्रीलंका संघर्ष कर रही है, बांग्लादेश आशा के अनुरूप नहीं प्रदर्शन कर पाई, लेकिन अफगानिस्तान बड़े खुश हैं. उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जिसकी की उनका आशा नहीं थी. सो इस समय 65 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 ओवर चमीरा जारी रखते हुए चोट लगने के बाद कॉनवे को इस समय गेंदबाजी करने के लिए अच्छी. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें. रन 9 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड. That's a good over from Sri Lanka, a good comeback over. Just the 2 runs in that over, 63 of the first 8 overs, and then just 2 runs from Chamira. He bowled well, bowled a very tight line length, troubled Devon Conway. Sri Lanka will need more such overs, but more than the number of runs that they concede, what they really need is wickets. Where are those going to come from? We'll have to wait and see. तीक्ष्णा 10वां ओवर श्रीलंका के लिए लेकर इस समय पेविलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. उनके सामने है कॉनवे 36 रन पर 31 गेंदों में. रविंद्र है 29 रन पर 23 गेंदों में. कॉनवे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. तीक्ष्णा की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार उसको कट किया खूबसूरती से कवर की तरफ 4 रन के लिए. बेहतरीन शॉट, गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर जाते देखा और खूबसूरती से उसको कट किया 4 रन के लिए. Well, I think Conway has hurt his hand, because the moment he hit that stroke, he wrung his hand in pain, as if to say that there is still some pain in that. But that was a beautiful stroke from him. पेन से गेन होता है, दिखाते हुए चौका जड़ने के बाद ऐसा लग रहा है. तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फिर ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन इस बार आजादी नहीं दे पाई. बांध के रखा. थोड़ा सा फील्डर मौजूद थे वहां पर, कवर पे उन्होंने फील्ड किया और कोई रन नहीं. बहुत असलंका वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फील्ड किया. एक चौके के बाद निश्चित रूप से बॉलर परेशान हो जाता है. फील्डर तो होते ही होते हैं, फील्डर को तो मौका नहीं मिला कुछ करने का. और इस समय कॉनवे तैयार खेलने के लिए. तीक्ष्णा को
इस बार अंदर आती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया, बल्ले के बीचों बीच लिया, चहलकदमी करते हुए अब अपने मनोबल को टटोल रहे हैं। श्रीलंका के लिए 69 रन बनाने के बाद मुझे लगता है कि अब एक आरामदायक स्थिति न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। श्रीलंका परेशान है, इसमें कोई शक नहीं। तीक्ष्ण गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया, उसको ऑफसाइड में फिर मौका मिला, दो प्लेयर्स के बीच में से 4 रन। प्रोड्यूसर भी हमारे उछलते हुए चौके छक्के का इशारा करते हुए, कॉनवे के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका। नंदन, almost an identical stroke. There's no protection for him on the offside and he's bowling outside the off stump, and at his pace, if he can beat the inside field, it is always going to be a boundary. There are 2 fielders on the onside but none on the offside. दोनों खिलाड़ियों के बीच में से पॉइंटर कवर के निकालते हुए चौका, और तीक्ष्ण बुदबुदाते हुए कि भाई ऐसे काहे बेरहमी से मार रहे हो। 73 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 चौके जड़ चुके हैं कॉनवे, खेलने के लिए तैयार। इस बार बहुत अच्छी गेंद लेग स्टंप पर पड़कर मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई, पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। मैंडिस चिपके हुए खड़े हुए हैं स्टंप्स के पास से, उससे ज्यादा विकेट कीपर से ज्यादा एक्सरसाइज कोई नहीं करता, या एम्पायर तो फिर भी सीधे हो जाते हैं, उकड़ू बैठते हैं विकेट कीपर, चिपके हुए एकदम। तीक्ष्णा की गेंद, हल्के से उसको ड्राइव किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ 10वां, 73 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। कॉनवे 44 पे, रविंद्रा 29 पे। So that is the end of the first power play. 10 overs gone. Sri Lanka was 74 for 5 at the end of the first power play. New Zealand are 1 run short, but they have not lost a single wicket. 73 for the loss of no wicket. Sri Lanka 44 to Conway, 29 to Ravindra. Sri Lanka largely going through the motions here. Chamira bowled a very good first over. Umpire Joel Wilson signalling that this is the beginning of the second power play from over number 11 to 40, which will allow the Sri Lankan captain to keep a maximum of 4 fielders outside the 30-yard circle. Tall and lanky Chamira, right arm over the wicket into Ravindra, who comes forward, opens the face of the bat, plays it up to Karun Ratna at backward point, not for runs. New Zealand remain on 73 without loss. There's a deep third man, backward point, a man on the cover boundary, a cover and a mid-off on the offside. On the onside, there's a mid-on, a mid-wicket, a man on the deep backward square leg fence, and a man on the fine leg fence. Sri Lanka need wickets. They don't look like getting one. There was one edge which flew down past the outstretched hand of Kusal Mendes, but apart from that, the batters have looked very comfortable. Here is Chamira into Ravindra, who comes forward once again trying to steer the ball down to third man. Once again plays it straight to the fielder there at backward point, and there is no run. New Zealand in no hurry. The only consideration for them would be that they would like 20 overs to be completed, which constitute a full game in case of rain. And they are well ahead of the DLS at this point in time, so even if there were rain to come after 20 overs, New Zealand would win this game comfortably. Unless, of course, they manage to lose wickets. So that would be their lookout. Bat the first 20 overs without losing too many wickets. Here is Chamira. Into Ravindra. Pick up shot from Ravindra. Doesn't really get over a bit, but still it clears the mid-wicket fence for 6. The smaller boundary coming to his rescue here, Ravindra. There was no fielder there, so he was not in any danger of getting caught. But he did not really get hold of that stroke. But the virtue of the fact that the boundary is smaller on this side allowed the ball to carry over the fence. Boundary number 6 and number 3, says Venkat. The third 6 for Ravindra in this innings, the third 6 of the New Zealand innings, takes Ravindra up to 35 and New Zealand up to 79 for the loss of no wicket. That stroke prompts a change in the field. The man in the mid-wicket circle goes to the boundary. The man on the fine leg fence comes inside the circle. But it might be a case of bolting the door after the horse has bolted. We'll have to wait and see if Ravindra repeats that stroke. First boundary of Chamira's bowling. He's bowled well so far. Bowled at a lively pace, a good length, got the ball to bounce. As here he is into Ravindra fuller this time, and Ravindra drives it, square drives it.
down to the cover boundary. There's a fielder there on the fence. A single is all Ravindra will get. Takes him on to 36 now. New Zealand on to 80 for the loss of no wicket. New Zealand needing to win this game to stay in the hunt for a place in the semi-finals. But the big margin by which they will win this game, as the game stands, would mean that it will be well nigh impossible for Pakistan to match that, even if they win against England. England have been one of the big disappointments of this tournament. They came in as defending champions, as here is Chamira into Conway this time, hurrying Conway into a defensive stroke. Ball played out into the offside. New Zealand remain on 80 without loss. England came in with a lot of hopes, aspirations. They were one of the favourites to get through to the semi-finals at least, if not win the tournament. But after that first game loss to New Zealand, they didn't really pick up at all. And they went from one loss to another. They have won only 2 games so far in this tournament, the last of which came against Netherlands, where also they were in a spot of bother, 6 wickets down for 206, before Ben Stokes came to their rescue. Here is Chamira again, into Conway, once again hurrying Conway into a defensive stroke. Well bowled by Chamira. Apart from that one ball which was hit by Ravindra for 6, he's bowled well, 2 overs for 9. But again, as we have said, economical bowling will take Sri Lanka only so far. What they need is wickets, but the way Conway and Ravindra are batting, Mukul, it doesn't look like there's a wicket round the corner. Tikshna looks like he will continue the bowling. He's not looked penetrative at all. सही कह रहे हैं नंदन, और इस समय मैं देख रहा हूँ रविंद्रा क्या खोज हुई है इस विश्व कप की, कहाँ मध्यम क्रम में किसी को बल्लेबाजी के लिए उतारते हैं और एक शतक के बाद उसको आरंभिक बल्लेबाज बना देते हैं और एक के बाद एक अच्छी पारियां खेलकर वो एक मजबूत आधार बन गए न्यूजीलैंड की टीम का। सो उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। कॉनवे और उनकी जोड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। He has been fantastic in this tournament. Here is Tikshna starting a fresh over into Ravindra, who plays it up to Karun Ratna at extra cover. There's no run. Ravindra, who spent a lot of time in India, in Vizag in particular, honing his skill against slow bowling on Indian pitches, and that seems to have held him in very good stead, as he's been one of the finds of this tournament. Very young in age, but has a very, very good head on his shoulders. Tikshna into Ravindra on his middle and leg stump. Ravindra trying to work it out on the onside. Plays it only up to Angelo Matthews at mid-wicket. There is no run. We'll have to wait and see when Matthews is introduced into the bowling attack. He has a happy knack of taking wickets. As here is Tikshna again, right arm round the wicket. Into Ravindra, and Ravindra pulls it between the big gap between mid-wicket and long on. A couple of bounces into the fence for 4 runs. Ravindra getting boundaries at will, picking the gaps in the field, not playing any risky strokes, using his feet very well, getting deep into the crease to either cut or pull, and any error in line or length from the bowlers is being punished. So that boundary takes Ravindra on to 40. Conway is unbeaten on 44. As here is Tikshna into Ravindra. Once again Ravindra going deep into his crease, trying to play it through to long off, but cannot beat Karun Ratna at extra cover, who's a good fielder there. Karun Ratna moves well, very agile in the field, covers a lot of ground, and it will take a good stroke to beat him in that position at extra cover. 84 without loss, New Zealand. Here is Tikshna into Ravindra, who goes off the back foot and whips it down to long on using his wrists. A very wristy player, Ravindra, like the players of the subcontinent. Gets a single to move on to 41, and New Zealand 85 for the loss of no wicket. Just 87 runs to win, with all 10 wickets intact. For the last time in this over, here is Tikshna into Conway, and Conway this time off the back foot plays it quietly down to long on. New Zealand playing very, very comfortably. They know that they have this game in the bag. They don't need to do anything drastic, anything silly, allow Sri Lanka to get back into the game at all. 12 overs gone then, at the end of which New Zealand are 86 for the loss of no wicket, scoring at well over 7 runs an over.
and all 10 wickets intact. Mukul. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. चमीरा की पहली गेंद कॉनवे को परेशान करती हुए ऑन साइड में उसे खेला जरूर, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। स्कोर इस समय है न्यूजीलैंड का 86 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की समाप्ति पर। कॉनवे है 45 पे, रविंद्रा 41 पे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक की ओर अग्रसर, और रविंद्रा और कॉनवे की जितनी तारीफ की जाए, पारी को जमाने की कोशिश में धीमी शुरुआत लेकिन बहुत ही ठोस शुरुआत, जिसमें कोई शक नहीं। जहां अवसर मिल रहा है उसको भुना रहे हैं। अभी पिछले ओवर में रविंद्रा ने बहुत खूबसूरत पुल करके 4 रन लिए थे। गेंद को पूरा समझते हुए मौका ताड़ा। चमीरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आगे बढ़कर उसको ड्राइव किया था हवा में, उसके साथ ही कैच आउट होकर वापस लौटते हुए रविंद्रा कॉनवे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, हाथ की चोट से भी परेशान थे। नंदन, Chamira has been troubling Conway for a while now, and Conway deciding to give him the charge, coming down the track and trying to play him back over the bowler, the bat turning in his hand and going to the one fielder inside the ring on the onside. That is mid wicket. No mistake there from the fielder there. That's very good bowling from Chamira. Conway losing shape completely on that one. Disappointing end to a very good innings from him. A wicket for Sri Lanka finally, something for them to cheer about. And even louder cheer in the stadium because as Conway departs, Kane Williamson is the batter coming in to replace him. विलियमसन का स्वागत है, विकेट का स्वागत है। जो लोग श्रीलंका को समर्थन कर रहे हैं वो इसलिए उत्साहित हैं कि एक विकेट गिरा, और जो विलियमसन के फैन हैं वो उसकी बैटिंग के लिए प्रतीक्षारत। शून्य समय विलियमसन मैदान पर पहुंचे हैं। कॉनवे जो कि अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे वो आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं। पहली सफलता श्रीलंका को। क्या ये उन्हें शेर बनाएगी? क्या उनके अंदर स्फूर्ति आएगी? कुछ ज्यादा शक्ति आएगी? कई बार होता है जोश आ जाता है नंदन। That should spur them on, give them some hope. But considering the fact that just about 80-85 runs required to win, with 9 wickets in hand and Williamson walking to the crease, is a daunting ask. But they have to keep believing because that is the only way that they can hope to stay in the game. So विलियमसन और रविंद्रा क्या कुछ कर पाते हैं? कॉनवे के आउट होने के बाद 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केन विलियमसन 33 वर्ष के उम्र के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 3 मैचों में 173 रन बना पाए हैं। बहुत ज्यादा घायल रहे हैं वो। 2 अर्धशतक जरूर उन्होंने झड़े। एक बार तो थ्रो में घायल हो गए, ग्लोव्स में उस एरिया में जाके अंगली में लगी जिसमें पैड नहीं होता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कॉनवे ने ड्राइव करने की कोशिश की थी, बल्ले में उलझती हुई मिड विकेट पर पहुंची और धनंजय डिसिल्वा ने कोई गलती नहीं की। कॉनवे खुद अफसोस करते हुए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन आउट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते आप, कितने ही प्रश्न पूछते रहिए। और अब विलियमसन आ गए हैं जिनका ओडीआई कैरियर 164 मैच खेल चुके हैं, 6,727 रन बना चुके हैं, 44 अर्धशतक, 13 शतक। यहां क्या कुछ कर पाएंगे? प्रश्न तैरता हुआ। वेंकट कह रहे हैं आंकड़े कितने ही हो, उस दिन आप क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चमीरा उत्साहित 1 विकेट लेने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विलियमसन उनके सामने पूरा सम्मान दिया जब तक पहुंची थी गली की तरफ। कोई रन नहीं। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए। विलियमसन एक वरिष्ठ खिलाड़ी है और उनको क्या संदेश देंगे रविंद्रा, जो कि इस विश्व कप की खोज है और स्टार खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के। 3 शतक जड़ चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में और 41 रन बनाए उन्होंने 32 गेंदों पर। 86 1 विकेट के नुकसान पर। चमीरा का काफी लंबा बॉलिंग रनअप है।
13वां ओवर चल रहा है इस समय। चमीरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अब तक 1 विकेट ले चुके हैं। इस बार उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, रन लेना चाहते थे विलियमसन, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि तेजी से उस पर झपटते हुए आ रहे हैं समर विक्रमा, अपने कदमों को पीछे खींचा वापस अपने बैटिंग क्रीज पर। पिच को बार बार नंदन बैट्समैन हर बॉल खेलने के बाद क्या देखने जाता है, पूछने जाता है कि भैया कैसे हो। I think it's just a ritual, something to ease their nerves, also get their concentration going. तो दाएं बाएं भी जा सकते हैं, लेकिन पिच पे ही क्यों जाते हैं? प्रश्न ऐसे ही बेवजह, कौन देगा इसका उत्तर? चमीरा इस समय बीएमएल एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने विलियमसन हल्के से उसको ऑफ साइड में खेला, लेकिन तेजी से बॉल पहुंची वहां पर फील्डर के हाथों में और कोई रन लेने का प्रयास नहीं। समर विक्रमा का थ्रो पहुंचा। इस ओवर के बाद निश्चित रूप से श्रीलंका का उत्साह जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि जहां चौके छक्के मिल रहे थे उनको, लगातार कॉनवे को परेशान किया चमीरा ने और उन्हें सफलता भी मिली। इस बार आगे बढ़कर उन्होंने देखा मैं अपने मनोबल को बनाऊं, आत्मविश्वास को ढूंढूं, मिड विकेट के ऊपर निकालूं, लेकिन मिस टाइम हुआ उनका स्ट्रोक और सीधा कैच फील्डर के हाथों। चमीरा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चमीरा की गेंद अंदर, इस बार अंदर आती हुई, कुछ स्टंप्स के पास तो नहीं थी, लेकिन परेशान करने में सफल हुई। अच्छा ओवर समाप्त, मैडन विकेट। 13 ओवर की समाप्ति पर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर चमीरा का विकेट मैडन। ये कुल 9 रन दिए उन्होंने 3 ओवरों में। बहुत अच्छा प्रदर्शन नंदन। Excellent over from Chamira. He's bowled very well, and the advent of Williamson out in the middle would slow down the run rate just a bit, because Williamson will take some time to get going. Also, the left-right combination would make Sri Lanka a little happier, because I think Chamira would be happier bowling to the right-hander. So विलियमसन और रविंद्रन कितना आगे ले जा सकते हैं? जैसा कि नंदन ने बोला, मिशेल, लेथम, फिलिप्स, चैपमैन, सेंटनर, सऊदी, फर्ग्यूसन और बोल्ट क्या इस मैदान को देखने आएंगे? प्रश्न इस समय श्रीलंका के सामने है। 172 का छोटा सा स्कोर कहा जा सकता है इस समय न्यूजीलैंड के सामने। तीक्ष्णा बॉलिंग करने के लिए तैयार, मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पे गए, हल्के से उसको पुश किया जब तक की फील्ड होती वहां पर। समर विक्रमा से 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज, और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज आ गए हैं तीक्ष्णा के सामने विलियमसन, और 42 पर पहुंचे हैं 33 गेंदों का सामना करके रविंद्रा। सीनियर पार्टनर अभी कहे जा सकते हैं, काफी देर से खेल रहे हैं और हो सकता है वो विलियमसन को समझाएं, लेकिन कप्तान काफी अनुभवी है, लंबा उनका अनुभव है, क्या कुछ करते हैं ये प्रश्न तैरता हुआ इस समय। करुणा रत्ने, समर विक्रमा सब मुस्तैद हैं कोई अवसर मिले। इस बार ऑन साइड में खेला उसको, जब तक कि करुणा रत्ने के हाथ पहुंचता 1 रन से संतुष्ट। जो चौके छक्के जड़ रहे थे नंदन, वो कम हो गए। नेचुरली एक खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद दूसरा खिलाड़ी संयमित हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा स्कोर है, इसलिए ज्यादा जल्दी आपको इस दबाव से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या रविंद्रा निकलेंगे? तीक्ष्णा के सामने फ्लाइटेड गेंद, उसको ड्राइव किया है सीधा विकेट में, सीधा मिड ऑन में प्लेयर के हाथ में। दूसरा विकेट न्यूजीलैंड का। मैंने कहा था जब एक बार विकेट मिलने शुरू हो जाते हैं, विकेट मैडन रहा नंदन, उसके बाद स्थिति बदलती हुई। अच्छा बल्लेबाज ओपनर मैदान से बाहर पैविलियन की तरफ जाता, उछाल कर खेलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑन पर खिलाड़ी मुस्तैद थे, सही से टाइम नहीं कर पाए। रविंद्रा श्रीलंकाई फील्डर्स को देखते हुए लौट रहे हैं पैविलियन। नंदन इस विकेट के बाद I think that's good play from Sri Lanka. They kept the mid-on in, and that is what Ravindra was trying to do, clear the fielder at mid-on, not getting hold of it, and a very good catch taken at mid-on, running to his left by De Silva. So 2 quick wickets, back-to-back wickets for Sri Lanka, certainly have got them back into the game. They know that they have only 84 runs to defend still, but those 2 wickets means that 2 new batters are out in the middle. Daryl Mitchell is the new player out, the 2 right-handers out in the middle. The Sri Lanka certainly would hope that they could apply the brakes now to these 2 batters, and maybe if they can get 1 more wicket, ideally if they can get the wicket of Williamson, I think this could make the game very interesting from here on. क्या गेम ऐसा इंटरेस्टिंग होगा? बहरहाल मिशेल 32 वर्षीय
जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2021 में अपनी शुरुआत की थी ओडीआई की, इस समय बीच मैदान में दोनों ही खिलाड़ी नए हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो स्ट्रोक्स नहीं ले सकते, वो आज़ादी नहीं ले सकते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ना होगा। 172 का स्कोर अभी तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन कभी पहाड़ भी बन जाता है। 2-3 विकेट और हुए नहीं और स्थिति बदल सकती है। श्रीलंका में उत्साह की इस समय भरमार कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीक्ष्णा ने भी विकेट लिया और इससे पहले चमीरा ने विकेट लिया था, तो दोनों बॉलर दोनों एंड पे यदि विकेट ले लेते हैं। मिशेल 8 इनिंग में 375 रन बना चुके हैं। तीक्ष्णा 2 रन दिए थे, 1 विकेट लिया और चौथी गेंद पूरे उत्साह के साथ 14वें ओवर की 88 पे 2 रिवर्स स्वीप किया, उसको 4 रन के लिए बीट करते हुए। वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके दाहिनी तरफ जाते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग, फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से चौका। That is modern cricket for you, Mukul. 2 wickets have just fallen, and the first ball that the batter has faced, he's played a reverse sweep down to backward of square leg for 4. Having said that, I think Chamira should have stopped that at backwards short fine leg. छलांग जरूर उन्होंने लगाई थी अपने दाएं तरफ, लेकिन उनकी छलांग गेंद की पहुंच तक नहीं थी और शुरुआत बिगुल बजाकर उन्होंने रिवर्स स्वीप करके बता दिया कि भैया वो रुकने वाले नहीं है। और फुल टॉस इस बार फिर रिवर्स स्वीप की थी, लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस का। काफी उछाल थी उसमें गेंद में और कोशिश जरूर उसी तरह की थी, लेकिन मौका नहीं था, उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो स्ट्रोक ले सके। 92 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद तीक्ष्णा के ओवर की। 30 रन दे चुके हैं, 1 विकेट लिया है। तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पूरा सम्मान दिया अंदर आती हुई गेंद को और ऑन साइड में फील्ड होते हुए समर विक्रमा के हाथों सीधी। ओवर समाप्त हुआ। श्रीलंका का 14 ओवर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर। 92 for 2 after 14 overs. So 2 back-to-back successful overs for Sri Lanka. First, Devin Conway was dismissed by Chamira, caught at mid-wicket by De Silva. And then De Silva was also the catcher who dismissed Ravindra off the bowling of Tikshana. So 2 wickets gone then. 92 for 2. New Zealand were 86 without loss, going along nicely. They have been pegged back just a bit. But the arrival of Daryl Mitchell at the fall of Ravindra's wicket has meant that he would go for the runs. He's not a batter who would play around for singles. The very first stroke was a reverse sweep of 4. The next ball was a nice juicy full toss, but he was predetermined that he would play the reverse sweep. Had he not done that, maybe he could have got a 6 over mid-wicket. Chamira starting a fresh over to the New Zealand captain. Right arm over the wicket. First ball is steered down to third man by Williamson. Whether it went off the face of the bat or off the outside edge, we'll have to wait and see. There was a slip in place who was interested for a bit of time. That the fielder there was De Silva again. It might have been a hat-trick of catches for De Silva had it been a little closer. But the ball going down to third man for a single. Williamson goes up to 2 rather. And that brings the new man Daryl Mitchell on strike to Chamira for the first time. Good captaincy by Kusal Mendes, putting a slip in place. He realizes that Sri Lanka need 1 or 2 more wickets in this phase of the game. If they can get Williamson or Mitchell out, they might still come back into this game. Slip, third man, point, cover, extra cover, mid-off, mid-on, backward, square leg and fine leg. Here is Chamira, who's bowled very well, beats Mitchell outside the off stump. There's an appeal for a caught behind. Chamira was convinced. Kusal Mendes wasn't. Chamira in fact went down celebrating, but that was not to be. And this time the Sri Lankan captain, not being lured by his bowler, refuses to be drawn in to go in for the review, and Chamira walks back to the top of his bowling mark. Lot of action out in the middle happening. 2 wickets in the last 2 overs, a reverse sweep for 4, an edge from the New Zealand captain down to third man, and now this ball from Chamira, which did nothing really, that flipped the pad. So that's an excellent decision from Joel Wilson. There was some contact, but it was not the bat but the pad. So very sensibly Kusal Mendes refusing to go for the review. Chamira is bowling well. He has his tail up. He thinks he is the bowler who can do it for Sri Lanka. That ball
short of a length, once again getting good bounce off this track, forcing Mitchell to play defensively up to mid-on, and there is no run. There is a spring in the step of the Sri Lankan fielders with those 2 wickets. New Zealand got off to a very good start, a flamboyant start, 86 without loss. But then Devin Conway gave Chamira the charge, and then Ravindra, trying to go for a big stroke also perished. And now Mitchell and Williamson trying to do the rebuilding. This crowd enjoying the game. They realize there is something in it now. As here is Chamira again from the BML and runs and bowls to Mitchell, who comes down the track and hits it high over long off. Doesn't get hold of it. Oh, he does get hold of it. It goes into the stands for 6. बहुत ही खूबसूरत शॉट, बैक फुट पे जाते हुए आपने लिफ्ट किया उसको सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ, और आसमान को छूती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। मिशेल बता रहे हैं कि वो भैया रुकने वाले नहीं है, पहली गेंद से उन्होंने अपने इरादे दिखा दिए। That is the kind of player he is, giving Chamira the charge and hitting it high over long off. It went very high in the air. For a moment it looked as if it would not clear the boundary, but then it did clear it quite comfortably. And that is his first 6, the 4th 6 of the New Zealand innings. Take New Zealand to within 1 run of the 100 mark. Here is Chamira into Mitchell. Mitchell plays it up to mid-on. Comes a couple of paces down the track as if to suggest that there might be a run in it. But Williamson was never interested. Comes down the track, does Williamson, to have a word with his junior partner. Probably advising him to follow a bit, to show a bit of restraint. But we'll have to wait and see whether Mitchell takes his captain's advice. 1 ball of the 15th over to go. Can Chamira pick up 1 more wicket? Or will Mitchell get 1 more boundary or 6 for New Zealand? What will it be? Here is Chamira, right arm over the wicket. For the last time in this over, runs in bowls to Mitchell, and Mitchell goes it into the air through mid-wicket. And that is 4 runs. Excellent batting by Mitchell. Not very good bowling by Chamira on that occasion. Straying onto his pads. And that was enough invitation for Mitchell to go aerial through mid-wicket for 4 runs to end the over. क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। मिशेल ऐसा लग रहा था कि फ्लोरीन को सुन रहे हैं और उनकी बात पे उन्होंने वही अमल किया। पूरा गैप था, खाली पड़ा था मिड विकेट का मैदान, और खूबसूरत चौका, एक छक्के के बाद एक चौका। मिशेल बता रहे हैं कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं। 103 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति पर। 103 for 2. An expensive over then for Sri Lanka. A 6 and a 4 for Daryl Mitchell, who was quickly moved on to 14. Tikshana starts a fresh over to the New Zealand captain. First ball beats him outside the off stump, trying to work it through the offside. Good work behind the stumps by Mendes. But Williamson had never left the crease, so there was no question of a stumping. But certainly a moral victory for the bowler. Tikshana, 1 for 30 of his 5 overs. He batted well too. He's the one who has kept Sri Lanka in the game with his cameo at the end. 38 not out of 91 deliveries. 3 boundaries in it. And now he's come back to pick up the wicket of Ravindra as well. So a good all-round performance by Mahesh Tikshana. But it's not going to be enough. He has to pick up some more wickets. Here he is into the New Zealand captain again. This time wrapping him on the pad. There's a loud appeal from Tikshana. Not backed up by Mendes. Probably realizing that the ball was missing leg stump. But certainly Tikshana has troubled the New Zealand captain on the first 2 deliveries of this over. The first one beating him outside the off stump. This one coming into him, hurrying him into that stroke. Mahesh Tikshana, a bag of tricks up his sleeve. What will he come up with? Here he is. Into Williamson, that's a full toss, and Williamson hits it through the very short mid-on that was put up by Williamson there. The short mid-on and the mid-wicket, playing it down to long on for a single. Williamson not taking full toll of that full toss. He could have hoisted it over mid-wicket. There's nobody there. But
Williamson in fact trying to go the orthodox way. That brings Mitchell on strike. New Zealand 104 for 2. Here is Tikshna to Mitchell. Mitchell plays the reverse sweep. Excellent stroke. There's a fielder there at cover who tries to give chase but in vain. That was played so beautifully, placed to perfection between the short fine leg, between the short third man, beg your pardon, and the cover fielder. Excellent stroke from Daryl Mitchell. The second time in 2 overs that is it, a reverse sweep. And Mukul, excellent batsmanship from Daryl Mitchell. मेंडिस को सोचना चाहिए अगर मिशेल के इरादों को भापें, वो दूसरा प्रयास उन्होंने लगातार रिवर्स स्वीप करके कहा है और फील्डर नहीं है उस आसपास, अब किया. He's got a fielder there and the follow-up delivery beating Mitchell outside the off stump. So that's good bowling by Tikshna. 3 balls in the over that have beaten the batter, and the one boundary that has come off a reverse sweep. So rather than discredit to the bowler, that should be credit to the batter. And as Mukul said, I think Kusal Mendes erring in not putting a fielder in that position. He should have been aware to the fact that Mitchell plays that stroke very well and very often too. He has plugged that gap now. There's a short third man, there's a point, sweeper cover, extra cover, mid-off. Here is Tikshna into Mitchell. Mitchell comes forward, plays it quietly back along the track. End of another good over for New Zealand, 5 runs off the over. After 16 overs, New Zealand 108 for the loss of 2 wickets. That leaves them just 64 runs away from victory. And drinks are on the field. So Mukul drinks on the field, the first drinks. 16 overs gone, 108 for 2. Everything pointing to a very easy New Zealand victory. इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है शुरुआती दौर से ही कागजों में भी भारी था. 73% उनकी जीत की होती और श्रीलंका ने 172 रन जब बनाए तो वो और ज्यादा आश्वस्त हो गई. लेकिन अभी जो गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन हुए, चमीरा को विकेट मिला, उसके बाद तीक्ष्णा ने जिस तरह से गेंदबाजी की, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल हुए. लेकिन मिशेल ने उस दबाव को आते ही उतार दिया. ऐसे लगा कि वो अंदर से तय करके आए थे कि मैं रविंद्रा और कॉनवे की विरासत को जारी रखूंगा, कोई भारत नहीं आने दूंगा. 3 गेंदें तीक्ष्णा ने बहुत अच्छी डाली, 2 में स्टंप्स बिखेरने की कोशिश की. मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ता होगा जब एक बल्लेबाज को, चाहे वो क्रीज पे ही खड़ा हो, लेकिन जब स्टंप्स बिखरते हैं तो कुछ तो डरता होगा कि अरे यार मेरे को ध्यान रखना है, विकेट कीपर पीछे मुस्तैद है. Absolutely, they were beaten on both occasions, so those were moral victories for the bowler. But again, because they are chasing a very small score, that pressure on the batter is not there. And also Mitchell is the kind of player who will play the big shots no matter what. And that eases the pressure on New Zealand. And Williamson knows that Mitchell at the other end is going to keep getting boundaries. So he just has to keep his end up. And I think that is the way it will go. Williamson will keep picking up the 1s and 2s. And Mitchell will go for the big shots. श्रीलंका के खिलाड़ी आपस में इस समय चर्चा करते हुए ड्रिंक्स के साथ साथ बहुत सारे विचार गुथ रहे होंगे, बहुत सारे सुझाव आ रहे होंगे. कप्तान मेंडिस बहुत सारी चीजें तय करने की कोशिश कर रहे होंगे और दर्शक दीर्घा में इस समय ये समय है जब ड्रिंक्स होता है डांस करने का, क्योंकि संगीत डीजे चलता है पूरे स्टेडियम में और उसका पूरा आनंद दर्शक खेल का लेने आते हैं और डांस का आनंद दूसरे दर्शक लेते हैं. Also the Bengaluru crowd is very knowledgeable. They know their cricket, they know to appreciate good cricket. But it has been a little disappointing for them today with the way Sri Lanka batted. One hope for this crowd that Sri Lanka would put up a competitive total and New Zealand then would chase it, because I think New Zealand deserve to go through to the semi-final, the way they play. क्या बात है. और चील इस समय दूधिया रोशनी में उड़ती हुई आसमान पर संदेश दे रही हैं कि ये खेल कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर तक उन्हें ये रोशनी सूर्य का भ्रम पैदा करती रहेगी उनके लिए. उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि दिन उग गया है. वो रात की तलाश में अंधेरे से डूबता हुआ अंधेरे में जगमगाती हुई बिल्डिंग, अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची और दूधिया रोशनी से नहाया हुआ यह खूबसूरत स्टेडियम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत सारे मैचेस का साक्षी बन चुका है और इसमें सुनील गावस्कर के 95 रन भी बहुत हिम्मत बढ़ाने वाले थे. वो कमेंट्री भी कर रहे हैं. अपने आप को देखकर अपने प्रदर्शन को याद तो जरूर करता होगा वो खिलाड़ी. इस समय गेंदबाजी में कोई परिवर्तन है?
यस, एंजेलो मैथ्यूज को आजमाया गया है, जो कि बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी है और उनको आजमाया गया है बांग्लादेश के खिलाफ। उनको टाइम्ड आउट दिया गया था और वहां पर जब उन बॉलिंग करने आए थे तो गुस्से में उन्होंने विकेट भी ले लिया था। क्या वो यहाँ दोहरा पाएंगे? एंजेलो मैथ्यूज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने विलियमसन, बहुत सुंदर कट किया लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। समर में करुणा रत्ने ने उन्होंने फील्ड किया और थ्रो पहुंचा जब तक कि कोई रन नहीं। एक रन मिला, यस, एक रन दौड़ कर लिया उन्होंने और दोनों आपस में बातचीत करते हुए कि भैया एक रन ले लिया, दूसरा रन भी ले सकते हैं या धीरे धीरे आराम से। बहुत सारी बातें होती हैं जो आपस में बल्लेबाज करते हैं, अपने स्ट्रोक्स की विवेचना भी करते हैं, अपने मनोबल भी बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस समय। एंजेलो मैथ्यूज क्या कुछ कर पाते हैं इस ओवर में श्रीलंका के लिए। 109 रन है न्यूजीलैंड के 2 विकेट के नुकसान पर, 17वां ओवर। और इस बार बहुत सुंदर उसको पुल किया है, आकाश में तैरता हुआ सीमा रेखा पर नहीं पहुंच पाया। मिस टाइम, वहां पर मिसफील्ड जैसी स्थिति थी, टप्पा जहां खाया, खिलाड़ी आगे निकल गए थे लेकिन सिर्फ 2 रन मिलेंगे मिशेल को। वेंकट बता रहे हैं 2 रन से संतुष्ट है मिशेल। उछाल कर खेला था उन्होंने मिड विकेट की तरफ, वहां पर एक खिलाड़ी भी हैं, आसमान में थी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर थी, वो कुछ आगे निकल गए, फिर टप्पा जहां खाया वापस आए, तब तक 2 रन आसान से। मिशेल देखते हुए आसपास कि कहां उन्हें गैप मिलेगा जहां पर वो लॉफ्टेड उछाला हुआ स्ट्रोक खेल सकते हैं। एंजेलो मैथ्यूज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद और फिर पुल करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस टाइम हुआ। 1 रन जरूर मिला क्योंकि स्क्वायर लेगर अंपायर के पास कोई फील्डर नहीं था जब तक पहुंचते वहां पर। 1 रन से संतुष्ट। कुल 4 रन अब तक ओवर में दे चुके हैं मैथ्यूज। बैट्समैन भी हैं तो गेंदबाजी करते करते देख रहे हैं कि कहाँ गलती की बैटिंग की। जैसे नंदन कमेंट्री करते हुए हाथ हिलाते हैं, वैसे ही उन्होंने भी स्ट्रोक लेते हुए कि कहाँ भैया गलती हुई। ऐसे फास्ट बॉलर कई बार बॉल करने के बाद अपने हाथ को हवा में लहराता है कि स्विंग उसकी कैसी हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर ऑब्जर्व करें तो मिलती है। एंजेलो मैथ्यूज चौथी गेंद लेकर, और इस बार बहुत सुंदर ड्राइव किया, फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, सीधा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। खूबसूरत शॉट मिशेल ने बिगुल बजाया था। विलियमसन कह रहे हैं कि मैं भी कम नहीं हूं, मैं कप्तान हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं भी स्ट्रोक लूंगा। पहले मैंने सोचा था 1-1 रन बनाऊंगा, जैसे ही ऑफ स्टंप से बाहर गेंद मिली खूबसूरती से बैकफुट पे गए, उसको सुंदर कट किया और 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर न्यूजीलैंड का इस समय 116, 2 विकेट के नुकसान पर। वेंकट लगातार कागजों में उलझे हुए, हर रन उनकी मशक्कत करता है। एंजेलो मैथ्यूज इस बार स्टीयर किया, 3rd मैन पर मौजूद है वहां पर परेरा, उनको बीट नहीं करेगी लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ। एंजेलो मैथ्यूज की 1 गेंद बाकी है, अब तक 9 रन दे चुके हैं वो। आखिरी गेंद होगी 117, 2 विकेट के नुकसान पर। 172 चाहिए 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर का प्रेडिक्शन था नंदन का कि 20 ओवर में सिमट जाएगा सब, देखना है क्या कुछ होता है। 17वां ओवर है ये। एंजेलो मैथ्यूज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, हल्के से उसको कट किया 1 रन के लिए, जब तक कि करुणा रत्ने उसको फील्ड करते छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त हुआ, अब 10 रन दिए मैथ्यूज ने अपने पहले ओवर में, 118, 2 विकेट के नुकसान पर। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. इस समय पेविलियन एंड से गेंदबाज तैयार, गेंदबाज करने के लिए। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया तीक्ष्णा की गेंद को, अपने बाएं पैर को पूरी तरह से आगे लाए, बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया और कोई रन नहीं। मिशेल आने के बाद से निश्चित रूप से तेजी लाना चाहते हैं, खेल की चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाना चाहते हैं। मिशेल की गेंद और इस बार बहुत ही शानदार स्ट्रोक, सीधा लॉन्ग ऑफ पर 6 रन। गेंद की पहुंच पर पहुंचे, खूबसूरती से उसको उछाल कर खेला, लॉन्ग ऑफ
बाउंड्री के बाहर 6 रन। नंदन, इस खूबसूरत स्ट्रोक के बारे में। Beautiful stroke from Mitchell using his speed. The mid-off was in, so the stroke was always on. And 6 of the first ball would put a lot of pressure on Tikshna. तीक्ष्णा तीसरी गेंद अपने ओवर की एम्पायर के पास आए, अंदर आती हुई गेंद पूरा सम्मान दिया, ऑन साइड में खेला, मौजूद है वहां पर समर विक्रमा, कोई रन नहीं। विलियमसन उन्हें समझाने नहीं जाते, पिच देखने जाते। उन्हें लगता है कि भाई स्ट्रोक्स तो लेते रहिए लेकिन जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि 172 रन बनाने 124 बन चुके। तीक्ष्णा की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई, कोई आजादी नहीं देने दी बल्लेबाज को। कदम जरूर उन्होंने बढ़ाए थे, पहले एक बार कदम बढ़ा के छक्का भी जड़ चुके हैं, लेकिन इस बार कोई उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। तीक्ष्णा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों, लेकिन रन बहुत कम है, 172 का बहुत छोटा स्कोर है तीक्ष्णा की गेंद। फिर इस बार ऑन साइड में खेला उसको, जब तक लॉन्ग ऑन पर दौड़ते हुए आते। करुणा रत्ने 1 रन से संतुष्ट, दोनों ही खिलाड़ी। छोर बदला अपना। तीक्ष्णा इस समय प्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जोखिम आदमी उठा सकता है जब स्कोर बहुत बड़ा नहीं हो, तो वो बल्लेबाज को ललचाई हुई गेंद कैसे डाले। 125 2 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर का खेल समाप्त। तीक्ष्णा बॉल को हाथ से घुमाते हुए इस समय स्टंप्स के पास से क्रीज के कोने से इस बार हल्के से ऑन साइड में धकेला 1 रन के लिए। ऐसे छोटे छोटे 1 रन स्कोर को बढ़ाते जा रहे हैं और दबाव को कम करते जा रहे हैं। विलियमसन 10 पर, मिशेल 29 पर, 126 2 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति पर। 18 overs gone, 126 for the loss of 2 wickets. New Zealand 46 runs required to win of 32 overs. Williamson is unbeaten on 10. Darrell Mitchell unbeaten on a very quick fire 29 of just 19 deliveries, 2 sixes in it. Angelo Matthews to continue 10 runs off his first over. This match now looks like it is heading to its inevitable result, with New Zealand winning at a canter very comfortably with a lot of overs to spare, bolstering their net run rate and enhancing their chances of qualifying for the semi-finals. Angelo Matthews bowling with a third man, point man on the cover boundary, extra cover mid-on, long on mid-wicket inside the circle, a man on the square leg fence and a man inside the circle at fine leg. Angelo Matthews, military medium, right arm over, bowls to Williamson short, and Williamson pulls it between long on and mid-wicket, over the man at mid-wicket inside the circle for 4 runs. So once again a boundary very early on in the over, puts the pressure on the bowlers. Poor bowling from Matthews, trying to trap Williamson with a man on the deep backward square leg fence, but Williamson up to the task, picking it up early and playing it through mid-wicket for 4 runs. Here is Matthews again, into Williamson, and Williamson is bowled. Angelo Matthews, the maverick, the man known for getting breakthroughs, gets the New Zealand captain. Williamson walks back in disappointment. There was nothing really in the wicket, but somehow Matthews has conjured up a wicket. बहुत ही एक चौका मारने के बाद, मिड विकेट पे पुल करने के बाद ऐसा लग रहा था विलियमसन बहुत ज्यादा उत्साहित है और हर गेंद पे स्ट्रोक लेना चाहते हैं। बल्ले का किनारा लिया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले का किनारा लेके स्टंप्स पर पहुंची। निराशाजनक कहा जा सकता है। एक स्टंप्स पर सीधी आए बोल्ड हो, एक अपने बल्ले से टकराने के बाद बोल्ड हो, तो उसमें खींच ज्यादा आती है। Was well outside the off stump and Williamson trying to drive it through the offside. The bat coming down at an angle which got the inside edge, the ball ricocheting onto the wickets, and a wicket for the former Sri Lankan captain of the current New Zealand captain. Angelo Matthews in the side as an all-rounder, did not fire with the bat today, but now has picked up an important wicket. Still 42 runs away New Zealand. Sri Lanka still believing. Angelo Matthews in consultation with Kusal Mendes, the captain, trying to put proper fields in place. Williamson then being replaced by Chapman, Mark Chapman, the left-hander, who used to play for Hong Kong earlier.
in associate cricket, but now has qualified to play for New Zealand. Hasn't had much of a chance in this tournament so far, but today he has the opportunity to see his side cross the line. 42 runs required, plenty of overs to go, so there's no pressure of the run rate. All he has to do is stay out in the middle and give company to Daryl Mitchell. Angelo Matthews, with a wicket up his sleeve, runs in to bowl to Mark Chapman, right arm over the wicket. Slow one down the leg side. Disappointing start. Wide signal umpire Joel Wilson. Matthews is not amused, but that is down the leg side of the left-hander, and it was always going to be a wide. Angelo Matthews with that wicket of Williamson. Can he pick up another one here just to make this game interesting? No close-in fielders for Chapman. The closest fielder is the man at extra cover. As here is Matthews again. Into Chapman. Chapman off the back foot plays it up to mid-off. Chamira the fielder there. Tikshna the fielder there, beg your pardon. And there is no run. So after a first ball boundary from Williamson, this over has gone Angelo Matthews' way. Got the wicket of the next delivery and then has bowled 2 dot balls to Mark Chapman. Chapman who's just come out to the middle. New Zealand 3 wickets down for 131. All 3 batters out after being well set. Here is Matthews into Chapman. Chapman punches it off the back foot, goes through for 1 run. There's a chance of a run out at the bowling end, but Tikshna not hitting the stumps. We'll have to wait and see in the replay if Chapman had made his ground. He seemed very confident. He said of the moment he hit the ball. Very good runners between the wickets, New Zealand. I'm afraid one can't say the same about Netherlands, who have lost a number of wickets to run-outs in this tournament. That brings the right-handed Mitchell on to strike for Angelo Matthews. And for Mitchell, there's a deep mid-on, a deep mid-wicket and a deep backward square leg. Matthews to Mitchell, keeps him quiet. Mitchell plays it quietly out into the covers and there is no run. There's a man inside the circle at third man, a man at point, a man on the cover boundary. Extra cover, mid-off, long on, mid-wicket, deep backward square leg and a short fine leg. Kusal Mendis, the Sri Lankan captain, keeping a vigilant eye on his field, making frequent fielding changes, trying to outthink the batters. As here is Matthews again, for the last time in this over, runs in, bowls to Mitchell. Once again, a good ball from Matthews, a good comeback in this over from Matthews. Then, after 2 overs, he has 1 for 14, and New Zealand, after 19 overs, are 132 for the loss of 3 wickets. So still New Zealand calling all the shots, Mukul. They have managed to get 1 wicket, but the sheer scale of the total means that everything is going New Zealand's way. 132 for the loss of 3 wickets. Chapman is 1, Mitchell is 29. New Zealand requiring 40 runs to win, beg your pardon. Exactly 40 runs to win from the remaining 31 overs. Kusal Mending brings back his opening bowler Madhusanka back into the attack. Madhusanka, who bowled 4 overs from the BEML end, 4 overs, no wicket for 31. Bowling his first over from the pavilion end. He'll be bowling to the left-handed Chapman. Still no slip in place. Maybe Mendes is missing a trick there. Here is Madhusanka. Into Chapman, short, and Chapman pulls it, cuts it over cover for 4 runs. Poor bowling from Madhusanka on that occasion. Banging it short, all Chapman had to do was beat the cover fielder and the ball races into the cover boundary for 4 runs. बाएं हाथ के बल्लेबाज को पूरी आज़ादी मिली. कमज़ोर गेंद, राउंड द विकेट ज़रूर गेंदबाजी की थी, लेकिन काफ़ी उछाल लिए हुए थे. पूरा मौका था वहाँ पर बल्लेबाज को. चैपमैन हालांकि नए आए हुए हैं, लेकिन खूबसूरती से उन्होंने कट किया 4 रन. Easy first boundary for Mark Chapman then. Yes, here is Madhusanka again. Left arm over the wicket. Bowls to Chapman. Chapman plays it up to mid-on and runs a very quick single. The fielder there is a little bit on his heels. Angelo Matthews, the fielder there. And he is the slowest of the Sri Lankan fielders. Chapman quick to realize that. As soon as he played the stroke, called for the single and made it comfortably.
That single takes Chapman on to 6 and brings Mitchell on to strike for the first time in this over from Madhushanka. Madhushanka 4 overs, no wicket for 31. Bowled well but without luck. Beat the edge of the bat on a couple of occasions, but not with success. And now he is bowling to Daryl Mitchell. Mitchell, who is looking for boundaries, looking for the big shots, will hope that Madhushanka pitches in it short, because this is the shorter side of the boundary. He has a mid-wicket in place. There was also a square leg in place, but he's now brought that fielder inside the circle. So there's a third man cover and a long off out on the fence of the offside. And on the onside there is a mid-on inside the fence and a mid-wicket. That would suggest that Madhushanka would bowl wide Yorkers. That is what he does, the first ball outside the off stump. Mitchell comes forward and drives it through to long off for a single, not trying anything ambitious. Content to just hit the ball down the ground and change ends for a single. That single takes Mitchell into his 30s. He is 30, Chapman is 6. New Zealand getting closer to their total by the delivery. A 138 for the loss of 3 wickets. Dilshan Madhushanka, who starred in a very good last wicket partnership with Tikshana, has been unable to make an impact with the ball. Here he is into Chapman. Chapman off the back foot plays it through the offside. The batters go through for 1. Chapman was keen on the second. Mitchell sends him back. As the fielder on the cover boundary, that was Kusal Pereira, ran in quickly to ensure that the score remains to only a single. The single nevertheless takes Chapman on to 7, and Sri Lanka now staring at defeat. 139 for 3 is the New Zealand total. We are coming to the end of the 20th over. There's still a very good crowd waiting patiently to see this match through. Here is Madhushanka into Mitchell. And Mitchell hoists him over mid-on. 1 bounce into the fence for 4 runs. The mid-on is inside the circle, so that shot is always on. A half volley from Madhushanka, and Mitchell would be in fact disappointed that he did not get more bat onto it and the ball did not clear the fence. But he gets 4 runs nevertheless, the ball hitting the inside part of the bat, causing it to fall just short of the long on boundary. Another boundary to Daryl Mitchell takes him on to 43, the 4th boundary for him, and New Zealand go up to 143 for the loss of 3 wickets. 34, beg your pardon, is Mitchell, as here is Madhushanka switching to round the wicket, and Mitchell hits it back down the ground, and Madhushanka is hit on the foot. That must have been a painful blow. He's putting up a brave front, not wincing, not limping, but I'm sure that must have really hurt. That came very strongly straight back at him, and now he seems to be in some pain. That also marks the end of the 20th over. At the end of 20 overs, New Zealand 144 for the loss of 3 wickets. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. At the same point, Sri Lanka were 111 for the loss of 7 wickets. So New Zealand miles ahead, 144 for 3. 20 overs gone, Mukul. Still 28 runs to go. 172 का लक्ष्य बहुत छोटा साबित होते हुए और 144 3 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड बना चुकी है. तो बल्लेबाज तो आज़ादी ले ही रहे हैं, लेकिन बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत बड़ा रन स्कोर नहीं हो तो उन्हें बैटर को खरीदना मुश्किल होता है. 71 रन बने हैं 11 से 20 ओवर में. हम सोच रहे थे कि 20 ओवर में मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन 25 ओवर तक तो चलना ही है. स्पेल किसको कितना मिलता है ये सोचना है अभी. नंदन पहले हम लोगों ने 9th विकेट की पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप की थी. अब मुझे लगता है कि लक्ष्य कब सिमटता है इस पे एक पार्टनरशिप होगी. In all probability, these 2 batters will see New Zealand through. 144 for 3, so just 28 runs remaining. I would not think they would need 5 overs for that, the way Mitchell is batting. He might want to finish in the next 2 or 3 overs. राहत के क्षण होंगे वेंकट के लिए.
यदि ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। हमारे प्रोड्यूसर बहुत मुस्तैदी से देख रहे हैं कि मिशेल कहाँ स्ट्रोक लेते हैं। उनकी निगाहें मिशेल से भी ज़्यादा खतरनाक मैदान में गैप ढूंढ रही हैं। न्यूजीलैंड एक विश्वस्त जीत की ओर अग्रसर होता हुआ 144 3 विकेट के नुकसान पर। मिशेल हैं 35 पर। मैथ्यूज गेंदबाजी करने के लिए पूरा सम्मान दिया, बल्ले पर आने दिया, और ये सम्मान कितनी देर तक होता है ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आप एक गेंद पे सम्मान देके बॉलर सोचता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और उसके बाद अचानक चौका या छक्का जड़ देते हो तो ध्वस्त हो जाते हैं बॉलर के सारे हौसले, पस्त भी हो जाते हैं। मिशेल 35 पर 25 गेंदों का सामना किया। चैपमैन 7 पर है। एंजेलो मैथ्यूज बीमएल एंड से गेंदबाजी, दाएं हाथ के गेंदबाज की एक गेंद उसको ड्राइव किया ऑन साइड में। फील्डर मौजूद है लेकिन एक रन से नहीं रोक सकते वो। श्रीलंकन फील्डर कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वो पैनापन, वो झपट कर, वो तेजी जो होनी चाहिए। 172 रन है इसलिए बहुत ज्यादा आग नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है इस तरह की आग, क्योंकि कोई भी स्कोर हो यदि आप अपना सब कुछ झोंक देते हो जिसकी जरूरत है तो बहुत कुछ हो सकता है। 145 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी बल्लेबाजों ने श्रीलंका के अपना सब कुछ झोंका था, इसमें कोई शक नहीं। अब चैपमैन बाएं हाथ के बैटर आ गए सामने। एंजेलो मैथ्यूज के स्कोर है श्रीलंका का न्यूजीलैंड का 145 3 विकेट के नुकसान पर। मैथ्यूज के ड्राइव करना चाहते थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के थे, अपील वहां पर जोरों से ये कहते हुए कि पैड पे टकराई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में। मिशेल रन लेने के लिए भाग पड़े थे, तेजी से हाथ उठाया मैथ्यूज ने कि थ्रो इधर भैया को, और थ्रो के साथ ही उन्हें स्टंप्स बिखेर दिए। नंदन, That's a comedy of errors out there in the middle. There was never a run in it. Chapman was not responding at all, but Mitchell was intent on getting down to the striking end. And in the end, I think Chapman sacrificing his wicket for the senior partner, he would be disappointed. And New Zealand unnecessarily losing a wicket, probably trying to make it a little interesting for the spectators. दर्शक दीर्घा में उत्साह। चैपमैन 7 रन बनाने के बाद 6 गेंदों का सामना करके रन आउट हुए। जिस रन के लिए वो नहीं दौड़े थे, लेकिन अपने सीनियर पार्टनर को अपने पास पाकर उन्हें लगा कि पेविलियन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर मना कर दे तो ऐसा भी होता। That would have meant that Mitchell would have been out. Yeah. They would still have lost a wicket, but that of Mitchell. तो इसको कहते हैं त्याग, बलिदान। बंगलुरु की धरती पर इस समय चैपमैन द्वारा, हांगकांग मूल के खिलाड़ी द्वारा अपने सीनियर पार्टनर के लिए अपनी आहुति दी गई, इसमें कोई शक नहीं। 145 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल हो चुका है। नए बल्लेबाज क्रीज में पहुंचेंगे, दबाव में भी होंगे, थोड़ा अपने आप को अभ्यस्त भी करेंगे फिलिप्स, लेकिन वो भी आक्रमण करना जानते हैं, अच्छे शॉट्स लगाते हैं। प्रदर्शन उनका अब तक बहुत सराहनीय नहीं है, लेकिन रन कुछ बनाए हैं उन्होंने। 71 रन बनाए थे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद कोई बहुत स्कोर नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज पूरे उत्साह के साथ 1 विकेट लेना रन आउट करके, और इस बार अंदर आती हुई गेंद को हल्के से ऑन साइड में खिला। 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक कि फील्डर उसको फील्ड करते। मिडॉन पर 1 रन से संतोष छोर बदला मिशेल ने। मन कैसा खट्टा हो जाता होगा ना जब ऐसे रन आउट होते हैं, तो फिर धार पे आ जाते हैं, या वापस उसको जब तक चौके छक्के नहीं जड़े या जीत न मिले तब तक बेचैन तो रहते ही हैं। सो फिलिप्स इस समय एंजेलो मैथ्यूज के सामने है। 37 पर मिशेल खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड 146 4 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए डीप लॉन्ग लेग पर एक खिलाड़ी को भेजते हुए, एक स्क्वायर लेग एम्पायर के ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर और एक पॉइंट बाउंड्री पर एंजेलो मैथ्यूज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कट किया उसको खूबसूरती से 4 रन के लिए, दिशा दी उसको थर्ड मैन की तरफ। देखते रह गए सब। पहले ही आते ही फिलिप्स ने बता दिया कि भाई उनके इरादे भी बुलंद हैं। चंदन नगर Phillips also in Mitchell's mold. The very first ball he faces, a short third man and point inside the circle, so there's a big gap there, and he places it to perfection through them for his first ball.
सो गैप ढूंढिए और हल्के से उसको प्लेस कर दीजिए, रन आपके पास झोली में आ जाएंगे। फिलिप्स 4 पर, मैथ्यूज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फिलिप्स को इस बार अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया, बल्ले के बीचों बीच खेला और कोई रन नहीं। ओवर 21 समाप्त हुए, 150 रन न्यूजीलैंड के 4 विकेट के नुकसान पर। 21 overs gone, 22 runs for New Zealand to win, 6 wickets in hand. How many overs do you reckon, Mukul? With these two batters out in the middle, will they want to finish in the next 2 or 3 overs? दर्शकों के हिसाब से देखूं तो 30 ओवर में बनने चाहिए, लेकिन कैसे बनेंगे इस सोचने का प्रश्न है। उन्होंने, उनका पैसा तो तभी वसूल होगा, 50-50 ओवर का खेलो। श्रीलंका के आखिरी खिलाड़ियों ने ऐसी कोशिश की थी। 150 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन बनाने हैं। 2 ओवर 3 ओवर 1 ओवर, बहुत मुश्किल सवाल है। यदि 26 रन 1 ओवर में बनाने होते हैं तो 22 बन जाते हैं। 22 रन बनाने हैं 30 ओवर में, तो कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मिशेल को जरूर हड़बड़ी है पेविलियन तक गेंद को पहुंचाने की। इस समय मधुशंका की गेंद, पूरा सम्मान दिया, बल्ले के बीचों बीच लिया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। गेंद को आखिरी क्षण तक बल्ले पर पढ़ा, लेकिन जब देखा कि बॉलर से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। मधुशंका अपना 6ठा ओवर लेकर आए, 44 रन दिए हैं, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उनका प्रमुख हथियार है, लेकिन क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में से किसी को भी विचलित कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल सवाल है। अब नहीं लगता, न्यूजीलैंड के खेमे को देख के तो एकदम नहीं लगता। सब बहुत मस्त बातें कर रहे हैं आपस में, खेल से उनको कोई रुचि नहीं है। उन्हें बस है कि सेमीफाइनल की दौड़ में कैसे आए, अगले मैच कैसे होंगे। मधुशंका की गेंद, पटकी हुई गेंद, उसको बहुत सुंदर पुल किया, पीछे है उसके, तेजी से दौड़ रहे हैं फील्डर, फील्ड करते जब तक कि पहुंचता रन। श्रीलंका का थ्रो, 1 रन से संतुष्ट। 151, 152, अब सिर्फ 20 रन चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बस 2 चौके 2 छक्के, 2 छक्के 2 चौके, क्या कुछ होगा भविष्य के गर्भ में। क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करेंगे? मधुशंका हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ड्राइव किया लेकिन ऑन साइड की तरफ गया। जब तक कि फील्ड होता वहां पर करुणा रत्ने द्वारा 1 रन से संतुष्ट। एक रन, दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक मैच समाप्त होने से पहले छक्का तो आ जाए। हमारे प्रोड्यूसर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मिशेल है कि सुनते ही नहीं है। मिशेल भाई, कमेंटेटर बॉक्स के पास अब तक एक भी शॉट नहीं आया। खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट आना चाहिए। 39 रन पर आप हैं, 153 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। 19 रन चाहिए उन्हें जीतने के लिए। मधुशंका की गेंद और शॉट ऑफ लेंथ, काफी वाइड का इशारा, बहुत से बहुत परे थी। बल्ला जरूर घुमाया था, स्क्वायर लेग एम्पायर ने कहा भाई मैं बोल देता हूं वाइड है। और 153 4 विकेट के नुकसान पर रन अतिरिक्त बढ़े। 154 4 विकेट के नुकसान पर अब सिर्फ 18 रन चाहिए। कितनी गेंदों में बनने चाहिए नंदन भाई? 3 छक्के बहुत होते हैं अगर लगाएं तो, लेकिन दर्शकों को खुश करने के लिए वो नहीं आए, उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचना है। मधुशंका कैसी गेंदबाजी करेंगे और उसको ऑन साइड में खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन लेना चाहते हैं, ले लिया बहुत तेजी से। बहुत सुंदर तारीफ करनी होगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि बहुत आराम से चहलकदमी करते हुए श्रीलंका आ रहे हैं और अब समझा रहे हैं उनको साथी समर विक्रमा, भैया तुझे तेज थ्रो करना चाहिए था भाई, अब क्या पछताए होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 रन तो उनके खाते में गए। 156 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 16 रन चाहिए। 3 गेंदों में बनते हैं, 3 गेंदों में आउट भी होते हैं। क्या कुछ होगा? मधुशंका सोच रहे हैं न्यूजीलैंड को 16 रन से जीत चाहिए 170 गेंदों में। बाप रे बाप। मधुशंका ड्राइव किया उसको इस बार ऑफ साइड में, लेकिन कोई रन नहीं, क्योंकि तेजी से उसके पीछे झपटते हुए एंजेलो मैथ्यूज आए, जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं लेकिन फील्डिंग में कमजोर हैं। पर उन्होंने दिखाया कि भाई आखिरी क्षण में तो मैं भी थोड़ा तेज दौड़ सकता हूं।
21.5 ओवर का खेल हो चुका है। 156 4 विकेट के नुकसान पर जीत का सेहरा नंदन के सिर पे बंधेगा, इसमें कोई शक नहीं। मिशेल 39 पे हैं, 2 छक्के मारे तब 50 होगी। हमारे प्रोड्यूसर चाहते हैं कि मिशेल अर्धशतक बनाए। मिशेल भाई आखिरी गेंद है, 1 छक्का ऑन साइड में खिला, 1 रन। मतलब हम 6 मांगते हैं तो वो 1 रन देते हैं। वाह, बहुत नाइंसाफी है। 22 ओवर की समाप्ति पे 157 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। Zealand 15 runs away, 6 wickets in hand. Phillips and Mitchell out in the middle. Phillips on 8. He's made his intentions very clear from the moment he stepped out to bat. Mitchell, of course, is known for his big hitting. Mitchell guilty of running out Mark Chapman in Matthews' earlier over. Chapman was visibly disappointed as he walked off the pitch, shaking his head in disbelief. But that is all part of the game, and everything will be forgiven and forgotten. 157 for the loss of 4 wickets, New Zealand, as Matthews continues. Right arm over the wicket, into Phillips, and that goes through him. That is well bowled by Matthews. That was quick as well. Phillips, who has a peculiar style, crouching, waiting to play the big stroke, but that ball, after pitching, left him, and he went for the drive, very lucky not to get the outside edge. The third man is still inside the circle, so even if there is an edge, the ball might run down to the fence for 4. 15 runs New Zealand need to win this game. A very clinical performance from them so far. Here is Matthews again. Into Phillips, and Phillips off the back foot plays it down to the cover boundary. There's a fielder there, Asalanka. So 1 is all Phillips will get for his efforts. Takes him on to 9, and that brings Mitchell on to strike. New Zealand 158 for 4. New Zealand, who won the toss earlier today, put Sri Lanka into bat. Had them struggling at 113 for 8 before the last 2 wickets. The last wicket in particular put up spirited resistance to take Sri Lanka up to 171. Here is Matthews again, this time to Mitchell. And Mitchell plays it off his pads down to fine leg. That will run away to the boundary for 4. Matthews will be disappointed by that one. His fine leg is inside the circle, so he could not afford to stray down Mitchell's pads. And Mitchell very aware to the fact that the fielder is inside the circle, not trying to hit it hard, just helping it along its way. And the ball going past the fielder at short fine leg, also beating the fielder at long leg for another boundary to Daryl Mitchell, who goes up to 43 now. And New Zealand get even closer to their target. They go up to 162, 10 runs to get. Here is Matthews. Into Mitchell. Mitchell, the slow ball in the air. Fielder getting underneath it. A brilliant catch. New Zealand lose their 5th wicket. Angelo Matthews continues to weave his magic. A slow one on that occasion. Mitchell, not reading it, is lulled into playing that stroke. Checks his stroke at the last minute. The ball was in the air for a while, and Asalanka coming in from the cover boundary dives in front of him to take an excellent catch. This might be too little too late for Sri Lanka, but full marks to them for giving it all they have got. असलंका की तारीफ करनी पड़ेगी। उछलते हुए जैसे पहले की जमीन चूमे गेंद, उन्होंने अपने हाथों को उड़ा लिया और बहुत सुंदर कैच। एंजेलो मैथ्यूज को विकेट जरूर मिला, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कैच की भी। और मिशेल अर्धशतक नहीं बना पाए, इसका दुख हमारे प्रोड्यूसर को है। New Zealand somehow continue to lose wickets. They would be disappointed with this. The position they were in, 86 without loss at one point in time, 130 for 2, and from there they have slipped to 162 for 5. They are not in danger of losing this game, but still, the way their batters have lost wickets, Conway for 45, Ravindra for 42, and now Mitchell for 43. And in the middle of it all, Williamson for 14, Chapman run out tragically for 7. So that is some food for thought for New Zealand if they go on to play the semi-finals, which will be against India, mind you, who have been the top side in this tournament by a long, long way.
The way India have batted, fielded and bowled in this tournament has been nothing short of magical. And if New Zealand go on to qualify, it will be an India-New Zealand semi-final. And if New Zealand play this way, India will roll them over. Latham, the new man in, the wicket-keeper, who also captained the team in the absence of Williamson in certain games, comes to the wicket with New Zealand needing just 10 runs to win. As here is Matthews. Into Latham, on his pads, there's an appeal for a leg before wicket, not out, says umpire Wilson. Matthews was convinced, and straight away Mendes goes for the review. So we have had 3 reviews so far, one of which has gone the fielding side's way. Joel Wilson has been very good so far in this game. All his decisions have been spot on. But this time Matthews seemed absolutely convinced. As soon as the ball hit the pad, he went up. We'll have to see where the ball pitched. Probably pitched outside leg stump. It seems to have pitched outside leg stump. Also seems to have hit Latham outside the leg stump. So the conviction with which Matthews went for the review, I think now has left him. As the Sri Lankan fielders disperse, the umpire still checking the replay for the ultra edge. There's no bat involved, so it was straight onto the pads. But I think the fact that it pitched outside leg stump has convinced Matthews and the Sri Lankan fielders that this is not going to go their way. It pitched outside leg by a long way, so another poor review from Sri Lanka. They've lost both their reviews to very poor decisions. So I think the bowler and captain will have to cop the blame for that. Angelo Matthews, so experienced, making an error on that occasion. Here he is, runs into bowl to Latham. Latham plays it through the covers. He'll get a couple for that. The fielder on the cover boundary was too square, and by the time he gets to it, a couple of runs to end a successful over for Angelo Matthews. An even full over also, where we had a review, an unsuccessful one, but still New Zealand 164 for the loss of 5 wickets after 23 overs. 27 overs still remaining in this game. 5 wickets to take for Sri Lanka. 8 runs to get for New Zealand. Will it be this over, Mukul? We'll have to wait and see. Madhushanka is the bowler. Surprisingly, Sri Lanka have not given Chamira the bowling. Chamira has been their most economical and successful bowler. 4 overs, 1 for 20. But I think they have gone with Madhushanka, which really baffles me. 6 overs for 50, Madhushanka's figures. 4 overs for 20, Chamira's figures. But the captain still goes with Madhushanka. Here he is, running into bowl to Phillips. 8 runs to get for New Zealand. 4 come off the first ball, driven down the ground by Phillips. So that whittles the target down to just 5 runs, 3 runs in fact. 168 now New Zealand for the loss of 5 wickets. 4 runs to get. Good shot from Phillips in the slot. Once again Madhushanka over pitching and Phillips taking him to the cleaners. So 1 strike away from victory, New Zealand. Sri Lanka tried to make a match of it, but their total was never going to be enough. Also, they did not pick up wickets in the initial overs. Here is Madhushanka again. Into Phillips, short, pulled round the corner, 4 runs, 2 balls, 2 boundaries, and it's all over for New Zealand and Sri Lanka. New Zealand winning the game comfortably with over 26 overs to spare by 5 wickets. Sri Lanka losing out, and they still have to fight for a place in the Champions Trophy. A comprehensive win for New Zealand by 5 wickets. They got everything right today. Won the toss, put Sri Lanka into bat, bowled them out for 171. When they batted, got off to a very good start. And even though they lost a few wickets in the bargain, in the final analysis, they have won handsomely here at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. New Zealand have run out winners by 5 wickets. That makes their passage into the semi-finals even safer. Now Pakistan will have to win the last game by a big margin against England if they are to harbour any hopes of getting through to the semi-finals. So Mukul, in the end, a comprehensive win for New Zealand, and they will be very happy having lost the last 4 games, especially the last game here in Bengaluru to the rain to Pakistan. The way they have won here
will give them a lot of confidence going into the semi-finals. बहुत अच्छी बात कही आपने। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हुआ वो आज कंपनसेट हो गया। भारत की दृष्टि से कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड को आप एज ए कॉम्पिटिटर? I think it's a good matchup. India will still be favourites. They have beaten New Zealand in the league phase. But New Zealand are a great team when it comes to World Cups. They have been in the semi-final of, I think, almost every World Cup. They reached the finals the last time and lost very, very narrowly. So they'll have that in mind. The way India played against them, of course, showed that India have covered all their bases. They are good in every department. They have been dominant in every aspect of the game. But New Zealand now, with the knowledge that they are almost in the semi-finals, would plan much better and execute their plans much better. So New Zealand, having won this game against Sri Lanka comfortably by 5 wickets, requiring 172 to win. Conway and Ravindra got them off to a flying start. Conway and Ravindra gave them 86 runs for the first wicket. Conway caught De Silva, bowled Chamira 45. Ravindra caught De Silva, bowled Theekshana 42. Williamson bowled Matthews 14. Mitchell caught Asalanka, bowled Matthews 43. Chapman tragically run out 7. Phillips not out 17 of just 10 balls. Latham not out 2. 2 extras white balls, and New Zealand making 172 for 5 of just 23.2 overs. So with that news that New Zealand have beaten Sri Lanka by 5 wickets, this is Nandit Fadnis along with my fellow commentator Mukul Goswami, our scorer Venkat, our producers Florine Roche and Shiv Prakash DR.